Please. Thank you everyone. Please take your seats. Thank you, Chancellor, for the mission. I request the faculty to kindly take their seats. We are going to start now. A very good morning to one and all present over here. I, Shri Goswami, faculty CPJ School of Law, welcome you all over here for the orientation of BBA LL.B Honours and BBA LL.B Honours first year students of CPJ College of Higher Studies and School of Law. Today, to praise the orientation day, we are blessed with the presence of our chief guest, Professor S.C. Raina, former Vice Chancellor of Himachal Pradesh National Law University and former Dean of Faculty of Law, Delhi University. Sir, CPJ welcomes you wholeheartedly. Everyone a big round of applause. We are blessed with the presence of our guest of honor, Senior Advocate R.S. Goswami, sir, ex-Chairman Bar Council of Delhi and member of Enrollment Committee. Sir, CPJ welcomes you wholeheartedly. Everyone, a big round of applause. We pay a deepest gratitude to both of you for giving us a valuable time today. We are honored with the presence of our Director General, Dr. Chaturvedi, Director, Dr. Josna, Director of Corporate Affairs, Dr. Amit Jain, Principal School of Law, Dr. Shani Tyagi, Dean School of Law, Dr. Shweta, Departmental Coordinator, Ms. Sunita Sharma, and Program Coordinator, Ms. Shivali Rao. A big round of applause for our senior management, please. It gives us immense pleasure to welcome all our new students and the parents and the future lawyers who is over here at today's special event, which is organized for them as a vision for their future. Everyone, a big round of applause for all the students and parents who are over here. Chancellor Jain College of Higher Studies and School of Law was established in 2000 with standards of seeking and adopting innovative methods to improve the quality of higher education. The college has now established itself as one of the leading colleges, not only in Delhi, but also pan-India. May I request the guests to stand up in the honor of our national anthem, please. Himachal Yamuna Ganga Ujjala Jagati Saranga Tava Shubha Name Jage Tava Shubha Ashish Mange Gahe Tava Jaya Gata Jana Jana Mangala Dayak Jaya Himayat Bhagya Vidhata Jaya He, Jaya He, Jaya He, Jaya 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 He. Thank you everyone. Please take your seats. Orientation is a much-awaited event in a student's life. It gives him and her to return to the efforts for the term. CPJ School of Law offers 5 years integrated BA LL.B and BBA LL.B program approved by the Bar Council of India. The law school teacher standards and research quality is consistent, receive a high rating and is maintaining the strong research culture. CPJ School of Law has been top ranked among GGSIP university colleges among the top law schools Delhi by Competitive Success Review, Business World, The Week, The India Today, and the Best College Ranking Service of 2020. Placement is one of the prominent features of CPJ School of Law. We give 100% placement and internship opportunities to our students in law firms like law firms, KPOs, NPOs, Indian corporate MNCs, and with the senior advocates.
like BSc Legals, Next Gen Partners, Next in India, and many more. Student, it's a delight to mention that many of our students have successfully cleared the judicial exams. Our students Mr. Amit and Mr. Kashish are back 2018 and 19 serving as judicial officer in Delhi Judicial Service. Himali Sharma, Yogesh Bhardwaj has cleared Bihar Judicial Service and Rajasthan Judicial Service. And staying with and many other students which are highly placed in the reputed government jobs. We at CPJ School of Law believe in innovative learning practices that build the skills to build innovative thinkings and enhance employability with a foster and entrepreneurship mindset. We strongly believe in inculcating our students the vital attitude of lifelong learning, and therefore we provide our students an ample opportunity to develop self-motivating and creative. CPJ was established in 2007, and today our students and scholars cover the entire globe in their search of knowledge and meaning. Their contribution makes a difference everywhere. And it gives me immense pride to say that 3,000 plus students have been placed in reputed legal firms, APOs, and LPOs. 6,000 plus alumni associated with this contributing the growth of the college. 1,000 plus campus placements and successful events have occurred in CPJ. 1,000 plus high profile guests and 100 plus faculties for this strong mentorship of our law schools has been the reason of growth and success of students. On this note, now let's move forward for the lamp lighting ceremony. When the dark comes, let not condemn the dark and let the illuminate. On this note, I request our chief guest and guest of honor and senior management to kindly come forward for the lamp lighting ceremony, please. Thank you so much, everyone. Thank you. Let's now begin our program of today with the blessings of Master Saraswati. I invite on stage our student Yog Nandini from BCA course for performing the Saraswati Varna.
students next year आप में से यहाँ पर perform कर रहा हूँ हमारे आने वाले students के लिए. Let's keep the light up and the motivation for being in the orientation program high. On this note, I want to invite our mentor, Dr. Chancellor. Leadership is not a position or a title, it's an action and example. This perfectly suits to our Director General, sir. Sir has an honorable PhD from University of Sorbonne, France, a Master's in Economics from prestigious Delhi School of Economics, University of Delhi. Sir has stayed in the CPJ college for more than 12 years now. It's bring the rich knowledge to the college in diverse areas. The student community is benefited with his guidance and motivation programs of BDPs and pre-placement talks. To give the placements and the corporate in the legal world. With his support and hard work and motivation, the college has become one of the leading institutes in Delhi. If this dream, it's an honor to invite the embodiment of our college, Dr. Chancellor, Director General, to kindly come on the stage for the welcome address. Everyone, a big round of applause, please. A very good morning, everybody. Namaskar. As I see there are a lot of parents today along with the students. A real welcome to CPJ College. And a real welcome to all the students here on the very first day of embarking your journey towards a legal career. Very frankly speaking, orientation has a very important, the day orientation has a very important role in anybody's life. जिसे कहते हैं कि इसकी जो महत्ता है बहुत ही एक अधिकारिक रूप में है, उसको आप नाकार नहीं सकते. If you really talk about orientation, the word orientation अगर हम सोचें what is orientation, that means you are orienting towards something. जैसे आप किसी से पूछ सकते हैं what is your orientation in life? Like my orientation is towards being a human and things like that. So like आपका झुकाव, आपका जो main मंशा है वो क्या है? That is basically the orientation. So frankly speaking, on this orientation day, the college aims nothing but to kind of give you a real, a start that how these 5 years are going to be for you for the law students. As all of you are here, BBA LL.B and BBA LL.B students who will be pursuing 5 years, जो यहाँ 5 साल तक रहेंगे. But विश्वास करना, I am here for the last 12 years. मैंने बच्चों को बहुत जल्दी first year से 5th year तक पहुँचते देखा है. I always say to my students, your stay in the college, आपका जो college में जो आपका रुकना होता है 5 साल, वो F to F है. F is precious party जो आपकी होगी, which is called आगमन. That means we welcome you, आप उससे mix up होते हैं, and you kind of become very much a part of CPJ family. So from F to F, which is precious to farewell. So this is what is so important, that how things happen. And from freshers to farewell, you remain in the college from the F to F. And this is the complete 5 years of yours. Now what do you do in these 5 years? एक flicker की तरह जाता है. अगर हम really सोचें कि लगता नहीं कि एक बहुत ही गंदा phase जो हम सब लोग जिससे गुजरे, we all passed through that phase. And we would never wish in our lives or even our future generations' lives कि आने वाले किसी भी समय में ऐसा समय आए और एक ह्यूमन जो है आपका जो कंप्लीट ह्यूमन कम्युनिटी है वो उस फेज से गुजरे. एंड दैट इज व्हाट द कोविड टाइम दैट वी फेस. उस टाइम से पहले 2020 मार्च 2020 व्हेन इट इन्फेक्टेड इंडिया, उससे पहले शुरू हो चुका था. दिसंबर चाइना वाज ऑलरेडी इन्फेक्टेड. In 2019 itself, my brother-in-law, my only brother-in-law, he stays in Shanghai, China. And we were in constant touch. It was start of November that everything was closed in China. And he used to tell me that he is a restaurateur there, having some good number of restaurants in Shanghai and Beijing. So he said everything is stopped in Shanghai. All businesses just stopped. We can't move out of your house. So strict kind of a curfew situation. This happened in November 2019. So what I'm trying to say is, आज हम 2024 में बैठे हैं. मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कुछ हादसे और कुछ चीजें जो गुजरी उस समय वो लगता है कल की बात हो.
and in fact it's going to be 5 years. So बच्चों, this 5 years will pass just like a flicker, but आपकी पूरी लाइफ आप क्या आने वाली लाइफ को आप किस तरह से एंजॉय करते हैं, आप किस तरह से उठते हैं, आप क्या बनते हैं और आप क्या चाहते हैं, this complete orientation of yours needs to be decided right now. Only then 5 years down the line आप उसी बिल्कुल सेम दिशा में चल रहे होंगे और उस चीज को कायम कर सकेंगे, पा सकेंगे. You will be able to achieve those dreams. And they say you dream, we will assure that we will make you achieve it. But dream करना आपका काम है. मैंने पीछे प्री ओरिएंटेशन से बात की. एस्पायर करना आपका काम है, ड्रीम्स करना आपका काम है, परंतु डेफिनेटली ड्रीम्स अपने आप ही पूरे हो जाते हैं. आपको उसके लिए बहुत एक अथक परिश्रम करना पड़ता है. You really have to work too hard for that. It's not that it just falls from the sky on your lap and you become something in life. Nobody becomes something in life overnight. Take my words for granted. अगर कोई बिलियनर का बच्चा भी होगा और उसे उस एम्पायर पकड़ा ले, if he has not really studied well, if he hasn't been to school and colleges and everything, and he has not passed through that all stage, he won't be able to kind of have a good control over that empire. So please understand, number one thing, these 5 years are extremely important. And for this, you need to be very rest assured of the fact that what you do in these 5 years. My only thing to you is remain positive. Negativity मत आने देना. आज इस 5 साल की स्कूल कॉलेज लाइफ की बात नहीं कर रहा. 2 तरह के फेजेस होते हैं. जैसे there is a left, there is a right, there is a black, there is a white, there is a despair, there is a hope. There is always 2 things. Antonymous, it is called antonymous. अंधेरा है, उजाला है, रात है, दिन है. So there is always 2 things of life. One train traffic is going this side, one is coming this side. There is nothing which is always one way. There is always everything which is 2 way. So for a 2-way life, you need to aspire. But how do you succeed? अगर आपके अंदर कैलिबर है, आपके अंदर स्टफ है, कोई रोक ही नहीं सकता. अगर आपके अंदर कैलिबर ही नहीं है, आपके लिए एस्पायर करना, ड्रीम करना मूर्खता है. It is absolutely stupidity on your part to aspire at a time like this, and internally you are nothing. You would be nothing in fact. So in order to be something, that you aspire and your aspirations become true, कि आपके ड्रीम्स आप उसे रियलाइज कर सके, आपकी एस्पिरेशंस आप पूरी कर सके, you are able to achieve what you want in life. You need to have some stuff in yourself. You need to have. अब विराट कोहली ऐसे नहीं बन गया कि he is an established star batsman of not India world over. Look at the kind of hard work that he would have done. The kind of hard work. So like I would say a few things to you. Remain very disciplined. Ask say college is also family. So take ownership to the family. मैं बहुत विदेशों में रहा हूँ और एक चीज जो भारतीय हूँ लाइक ऑल ऑफ यू, पर एक चीज मुझे विदेशियों की बहुत ही अच्छी लगती है जिससे हम लोग बहुत लैक करते हैं, वो हम लोग सिर्फ अपने फैमिली और अपने घर के प्रति ओनरशिप रखते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि सब पर अमल होती है बात, पर टू अ वेरी मेजॉरिटी ऑफ पीपल. बट द मोमेंट वी मूव आउट ऑफ आवर फैमिली एंड मूव आउट ऑफ आवर हाउस, things are very different. That ownership is there. For example, we want to spit. Maybe on the road we spit. We want to throw. We have eaten a chocolate and we have the wrapper. It's not that we keep the wrapper in the pocket and throw it in a dustbin. We throw it on the road. A good majority of us. This thing you will never find with a foreigner in any of the foreign countries. The roads remain chic, clean. Absolute clean की जैसे कि मतलब अब ये भी किसी ने अपनी सफाई की हो, जबकि 24 hours is like that because they have a ownership towards their state, towards their locality, towards their nation. तो आज से कॉलेज के प्रति भी ओनरशिप रखेगा, बहुत जरूरी है. आज आपको गोस्वामी सर, रैना सर, if you allow me to take 5 minutes for please. जी पूरा टाइम है. All right. Would love to speak to my students because आप मुझे 5 साल बहुत सुनेंगे और आप कभी भी मेरे सारे एड्रेसेस आपके साथ रहेंगे, आप उनको भूल नहीं पाएंगे. जैसे पिछले 12 साल में मेरे जितने भी स्टूडेंट्स रहे उनको आज तक याद रहता है, सर आपके उस ओरिएंटेशन में ऐसा हुआ था, उस पीडीबी एड्रेस में आपने ये बोला था, सर हमने अमल किया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. आई बेसिकली नथिंग व्हाट आई हैव सीन इन माय लाइफ, लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव सीन, लॉट ऑफ अप्स, some downs also. I never flew when I was in the super hawk कि मैं हवा मोड़ने लग गया, नहीं.
I never got depressed or was not taken over by situations if I was in some low. तो एक इक्विलिब्रियम में एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है. वही बैलेंस आपको अपने स्टूडेंट लाइफ में मेंटेन करना है. ओनरशिप की बात कर रहा था. इमेजिन करो आप हिल स्टेशन जाते हैं किसी, आप एक हिल स्टेशन में जाते हैं, आपको सिर्फ 3 दिन के लिए रुकना है. किसी होटल में आप गए, शिमला में आपने चेक इन किया, आप एक बहुत अच्छे होटल में आपने चेक इन किया. नाउ यू आर इनसाइड दैट रूम and you or your maybe your family members are there, and you decide, okay, I'll take this bed is mine, and your brother is there, or with your brother, for example, your brother says, I'll take this bed, and okay, it's decided. And you order for a cup of tea, आप आराम से बैठ के just relaxing, and just while relaxing you realize कि come on यार, किसने इस रूम को डिजाइन किया है? ये जो पेंटिंग लगी हुई है, वो very big, it should have not been on this wall, it should have been on this wall. ये जो refrigerator छोटा सा रखा हुआ है, why is it put on this side? It is obstructing our movement. This could have been kept below this, etc. etc. 5 क्रॉस एकदम से 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर आप घूम लेते हैं, पर क्या आप उसे उठाकर चेंज करते हैं? जी नहीं. आप 3 दिन उसको वैसे नहीं देखते हैं, उसे वैसे ही पढ़ा रहने देते हैं, और 3 दिन बाद चेकआउट करके वापस आ जाते हैं. Because reason is you don't own that place, you don't own it. So once you develop ownership towards something, it's a very different view. आज आप कॉलेज से गुजरते हुए आप निकल रहे हैं अपने रूम से, आपने देखा आई एम द लास्ट पर्सन टू लीव द रूम, एसीज के सारे स्विचेस ऑन है. अगर आपके अंदर ओनरशिप होगी, आप एसी के स्विच बंद कर देंगे. And this is an example. So this is what I would love to say. Have ownership, be very disciplined. Discipline is such an important thing. Remaining disciplined in life is one of the major reasons for being successful. अगर आप discipline अपने अंदर लाते हैं, अपने पूरी दिनचर्या में discipline मानते हुए चलते हैं, and you really remain disciplined as per that, definitely you will be something. So be disciplined. Examples ही लूँगा, beautiful examples. I don't have that much of time today. Students आपसे जरूर share करूँगा चीज़ों पे. एक दिन आपका सिर्फ discipline के बारे में बात करूँगा 2 घंटे. एक दिन आपसे सिर्फ और सिर्फ एटीट्यूड पे बात करूंगा 2-3 घंटे तक. एटीट्यूड ठीक रखिए. कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. कीप योर एनर्जीज हाई. एनर्जीज का हाई रहना बहुत जरूरी है लाइफ में. आई वुड नॉट लाइक कि मैं सुबह 10 बजे लिफ्ट में एंटर किया और उसमें 2 स्टूडेंट्स और एंटर किए, वो मुझसे कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर. अरे यार, दिस इज नॉट 4 o'clock के आप वापस जा रहे हो पढ़ करके, मे भी थोड़े से थक गए होंगे. But morning 9:30 you're talking to me with no energy in you, something is lacking in you. Energy is very important. एक छोटा सा एग्जाम्पल, किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप में चले जाएं, आप सभी जाते होंगे अपने अपने रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से, मंदिर या गुरुद्वारा या मस्जिद या चर्च, व्हाटएवर. किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाइए, उसके अंदर आप जैसे ही एंटर करेंगे, यू हैव टेकन योर स्लीपर्स आउट एंड यू हैव एंटर्ड दैट sanctum place of worship, आपको एक चीज टच करेगी, एक साइलेंस में something will touch you, जो आपको लगेगा कि something different, उस एयर में कुछ अलग होता है. What is that? What is that? It's nothing. It's the energy. It's the energy within that place. Why is that energy? कोई प्रे करने जाएगा ही नहीं. कभी जिंदगी में कोई प्रे करने नहीं जाएगा until unless उसके अंदर से उसकी आत्मा नहीं बोल रही हो कि तुम आज मंदिर जाओ, वहां पर पूजा करो, ईश्वर को तुम जो भी आज हो उसके लिए धन्यवाद करो, शुक्राना करो, and things like that. And once you are inside that, आप चाहे कुछ भी हो, आपने जहां अपनी चप्पलें उतारी, और टेकन योर स्लीपर्स आउट, आपने अपने हाथ धोए, आपने जैसे एंटर किया, यू आर अ ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन. आपके अंदर कुछ भी हो, अब आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक अच्छापन है. आप एक बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ एंटर करोगे, और वहां जब आप एंटर करोगे, आपसे पहले लाखों लोग उस जगह को इसी तरह की मानसिकता के साथ एंटर कर चुके थे, जो पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आए थे. वो अपनी जब वापस लौटते हैं, उस एनर्जी में एनर्जी छोड़ जाते हैं, और वो जगह इतनी ज्यादा एनर्जाइज होती है कि जब आप पहली बार जाएंगे, जब कभी भी जाएंगे, आपको वहां की एनर्जी छुएगी. So this is energy. To develop that energy in you, my students, fire जब तक आपके अंदर नहीं होगी, fire, you won't be able to exhibit and do. बहुत competitive word है, बहुत competitive. 5 साल बाद आप realize करेंगे कि how much of competition is all around you. So maintain these things, be very positive, remain very strong, and of course, one last thing I would say, keep a very, very strong belief about yourself.
जब तक आप ये नहीं सोच सकते मैं ये कर सकता हूँ, आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। I can do this and have this belief. आत्मविश्वास जिसे कहते हैं, self belief, have that. Self faith, have that. And last example of the day of this orientation, आप कभी साउथ इंडिया गए होंगे आपने बहुत, तो अगर वहाँ के मंदिरों में कभी आप विजिट करेंगे, पद्मनाभम in Thiruvananthapuram, which is Trivandrum earlier, और मीनाक्षी in Madurai, और maybe रामेश्वरम टेम्पल in रामेश्वरम, इन किसी भी मंदिरों में आप जाएंगे तो उसके पिछले प्रांगण में, जिसे कहते हैं मंदिर का पिछवाड़ा सा होता है, जहाँ पर किसी भी साउथ इंडिया के लीडिंग मंदिर में जाएंगे, वहां पर आप हमेशा फाइंड करेंगे वहां पर हाथी बहुत मिलेंगे, महावत होंगे। क्योंकि ये परंपरा रही है साउथ की सारी से एम्पायर्स में, सारी स्टेट्स में, कि जब भी कोई दशहरा या ऐसे फेस्टिवल्स होते रहे, ओणम वगैरह होते रहे, तो मंदिर को एक हाथी का बच्चा दान किया करते थे अपने, जो कि फ्लीट ऑफ एलिफेंट्स होती थी, उनमें से एक हाथी मंदिर को दान किया करते थे। तो सदियों से आपके मंदिरों में, साउथ इंडिया के मंदिरों में हाथी पलते रहे हैं, और जब भी आपका ये कोई दशहरा या फेस्टिवल्स होते हैं साउथ इंडिया के, इनके बाकायदा उस वाली सिटी में एक प्रोसेशन निकलता है जिसमें हाथियों को सजा करके ले जाती है। मैसूर का जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, आप लोग शायद जानते समझते होंगे। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आप कभी जाकर के देखें, एंड आई फिनिश अप माय टुडेज एड्रेस विद दिस, आप कभी भी जाकर के देखें तो आप नोट करेंगे कि एक बड़ा सा हाथी, इतना भीमकाय हाथी, टनों का हाथी होगा, वो एक छोटी सी लोहे की जंजीर से खूंटी में उसका एक पैर बंधा हुआ है। मतलब अगर वो अपना पैर इतना सा ऐसे भी उठाएगा और वो खूंटी 1 सेकंड में बाहर निकल आएगी, एंड ही इज फ्री, बट वो चुपचाप खड़ा हुआ है, वो कुछ नहीं कर रहा है। आपके दिमाग में आएगा ऐसा क्या है, इस हाथी में तो इतना दम है, ऐसी 15 खूंटियों का अपने हाथ पैर हिलाएगा और वो खुद नीचे जमीन से निकल आएगी, सिर्फ ही स्टैंडिंग फर्म। व्हाई इज दैट सो? It's just because जब वो बहुत छोटा था और जब उसे इसी खूंटी से इसी तरह से बांधा गया था, and on that day he tried his life, he tried his level best to free himself, but he could not. उस समय वो खूंटी और वो जंजीर उसके लिए बहुत ज्यादा थी, वो छोटा बच्चा था, वो हर रोज ट्राई करता था, नहीं कर पाता था, and he finally gave up. उसके अंदर, उसकी सेल्फ बिलीफ के अंदर ये चीज धारणा, the belief is धारणा, आप उसके अंदर ये आत्मधारित हो गई, मतलब this thing remained, it descended into that हाथी कि मैं चीज नहीं कर सकता। और आज जब उसे क्षण 1 सेकंड के भी किसी पल में कर सकता है, वो नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे पता है उसके अंदर बात धारित हो चुकी कि मैं इसे नहीं कर सकता, वो नहीं करता है। तो by the spirit, have a very strong self belief in yourselves, ये बहुत जरूरी है। And last thing I would say is you dream, you aspire, but definitely develop your caliber, your strengths, your mental strengths and everything. वो आप इन 5 सालों में कर सकते हैं। गोस्वामी सर, रैना सर is an academician, वो आपको definitely बोलेंगे, and Goswami sir, I really have my highest of regards for him, very close to him, and I've been with him for years. The kind of person that he is in litigation, Bar Council of Delhi के chairman रहे, enrollment committee Bar Council of Delhi के chairman रहे, अभी भी हैं, and this is what it is. So believe me, you have some very nice words coming from them. Enough from my side to get you oriented today. Love you all, and namaskar to all the parents. Thank you so much for coming today. Please be rest assured, आपको पढ़ने अच्छी जरूरत है। Thank you so much. Thank you. Thank you so much, sir. A big round of applause for our Director General, Mr. Dr. Pleasure. We have Buddha once quoted, "Observe good faith and justice towards all the nations, cultivate peace and harmony with all." On this note, I once again would like to welcome our chief guest for today, Professor S.C. Raina, former Vice Chancellor of Himachal Pradesh National Law University and former Dean of Faculty of Law, Delhi University. Sir has been former Dean for the National Law University, Himachal Pradesh at Shimla. With a robust academic and administrative background, Professor Raina
brings a wealth of experience to his role. Before his appointment to NLU, Sir was in charge in Delhi University as a dean, and where his significant contribution to the legal education and institutional development, his leadership and innovative approach has been instrumental in shaping the future of the legal studies. On this note, once again, sir, I welcome you at CPJ wholeheartedly. Everyone, a big round of applause. Now I request sir to kindly come on the stage. Yeah. Let's all give the note and we'll get to this. Good morning to all of you friends. I remember the day when I was a student like you, and it was my first day to enter to the hall, where there was no orientation but except the teachers who used to meet us. I am talking of 1974, 73. Orientation was almost unknown. Moot court was unknown. Competitive examinations were unknown. And we were also, I do not know why are you gloomy. You should be blooming, not gloomy. Because you have joined such a career in life where you can achieve anything. Honorable Justice Chancellor was also a student like you. When he joined Delhi University as a student and for orientation. So don't think that anybody is so big today. They have traveled through this journey. And I hope you will also travel and reach to the glorious path of your life at some. Except that there are certain fundamentals which I think you should know and you must be knowing better than me. Except that I have only to guide you as how to do it and why not to do it. The most important thing in the career of law is that of discipline. Because we come from different colleges or schools, the level is 10 plus 2. We are urchins there, not students there. The mischief is part of our career at that point of time. Here you have to shun that mischief. I mean to leave that mischief a bit quicker and faster so that you can learn what you have actually achieved. Because you have entered into that part of life which is your career beginning. You cannot reverse back your career now, friends. Please understand. You can do any other law, you can do whatever you like now, but this tinge of law will remain with you. So this is a part of career of your life. आप अंदाजा करिए जैसे लड़की को पुराने जमाने में आप तो नहीं शादी के बाद नाम बदल जाता था कास्ट लगता था हस्बैंड का इसी तरह आपको ये कास्ट लग गई है कि आप ला के ही स्टूडेंट अब आप कुछ भी बनिए whatever you may become Chief Justice of India, the law is there. So you have to dedicate yourself to the subject. This dedication is important. How to come, how to know about that. Dedication is three sides. Dedication from you, dedication from teacher, and dedication of course from management or the institution. You give your part. Your part of dedication is based on three things. The discipline first. What are the basics of discipline is that please attend the college regularly. Don't think that you have paid 30,000-40,000 fees or whatever the fees may be. In the national law universities or universities like Global General, we pay in lakhs and other things. Whatever the fees may be, everywhere you are a student and you have to behave like a student and to get yourself dedicated like a student. जैसे भगवान की शरण हो जाते हैं, ऐसे ही आप शरण हो जाइए कि आपको 5 किताबें अच्छी मिली है जो आपका कैरियर बना देगा। वो 5 किताबें चाहे किसी भी की जो लॉ हो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, जो you may get
interested in not every part of law, but in few parts of law. But we have to pass and qualify the examinations. For that, we have to read all parts of law together. I'm sure that CPJ college, if I know a little bit of it for the last 15, 17 years, is like a very good college. Not good college, but a very good college. Of course, being at a periphery of Delhi, and we have some craze of different things. We may get less admissions, we may get less number of students, but the quality of the students we have never compromised in the CPJ. So the quality is important, not the quantity is important. We may have only 30 students, but we will have the 170 students who are dedicated, who are disciplined, who are qualitative. I think Goswami Sahib will definitely clear you as to what I mean by qualitative is that they compete everywhere. And they have that kind of zeal of competition that they will be a brighter part everywhere and anywhere. The second thing is that you must have joined this college not by friction that IB University ka result aa gaya and you got the seat here. It is not by simple seat. It is that you deserve this college, you got it. So always think it is the grace of Almighty that you got such a good college. There may be students like me who will not get this college, who may get the college who are affiliated to the IB University as they have extended beyond globe. That's almost in Ghaziabad, Saibabad, Greater Noida. I don't say I'm not demeaning them, but they are the colleges where the infrastructure too is not good. I have seen a college where, I need not to name it, where they go for holidays. Monday को छुट्टी कर दी तो BBA पढ़ाते हैं, Tuesday को छुट्टी करा दी तो लॉ पढ़ाते हैं, तो 2 दिन छुट्टी होती वहाँ क्लासरूम इतने नहीं. So you should be thankful where you have a college, where the infrastructure is well laid down, and I'm sure that the quality of teachers I have not seen anything happening in CPJ college where there has ever been a blame on the staff of the college, dedicated students. I mean dedicated staff. You have to become yourself not only dedicated, you have to be demanding at times. That demand must not be treated to be as a protest, but that demand is itself a sort of dedication. If there is not a book, अब तो खैर किताबों का ज़माना ही नहीं रहा, अब तो नकल का ज़माना है, नकल तो खत्म. अब तो हमें जो क्या बोलते हैं इसको, गूगल बाबा बोलता है वही हम लिखते भी हैं, आंसर में भी वही लिखते हैं. But with my folded hands, if I have a little bit of experience, please don't resort to Google when you are dealing with law. Because what is it? That the Google has nothing but the blocks of law. Block means मैंने अपने हिसाब से लिखा है कोई चीज. मान लीजिए we got a new criminal law recently in July. If I start writing tomorrow, I may write 50 pages on new criminal law. And next time when you get an assignment on what is new about the criminal law, you will take my blog and write it. Or copy from it. That blog is my thought, that's not your avatar. And my thought is not correct, my thought will be abstract. I may be against a particular dispensation, I may write, उसको कहते हैं वाही दवाई लिख दो, किसी के. So blogs are not authentic, as the book is. Right? If you have, it is well said, that if you have to make your career, you should get your new stain. STAINED. Stain means उस पर दाग लगने चाहिए. किसके? इंक के, स्याही के दाग लगने चाहिए कैरियर पर, तब कैरियर बनता है. ऐसे नहीं कि गूगल के दाग, गूगल का कोई दाग नहीं. So that means you will have to wet your shoes in order to see the depth of the sea. जब तक आप जूता खोल के समंदर में नहीं जाने की कोशिश करेंगे, आपको समंदर की गहराई का पता नहीं चलेगा. So you have to check the library.
Make it a habit to go to the library. I don't mean how much time you go, but at least for 1 hour every day. Earlier it used to happen a library class. अब तो सारे कॉलेजेस में बता दिया कि हम तारीखी के रहता है. Or it used to be having a library class, one class dedicated to library. And the head of department or the teachers concerned used to check up that you are in the library. Please don't use that habit. Go to the library for half an hour at least. If you do not read anything, read the newspaper. Develop your vernacular, develop your language. I mean, just somebody was saying earlier, Goswami was saying to somebody that language is important. Language means that communication is important. And if you have to practice in the metropolis, the language is important. Not it is important in metropolis, as they are inviting the foreign firms to come to India. So your communication skill is important. That communication you will develop not by reading the Google, not by reading the blogs, but by reading the books. आपको शायरी भी करनी है तो किताब ही पढ़नी है. आपको किसी को गाली भी देनी है तो किताब ही पढ़नी है. So you will not read anything from Google unless you read the books. So please, this is my request on the first day of reverse. At least develop the habit of reading books and leaving the Google aside. You may take the help of Google, I am not averse to that. But books are important. This promise should come from you on the first day. And I hope the staff of this college will definitely keep it up by saying that yes, library is as important as the class teaching is. The second is that wherever you find difficult, whatever you find difficult, ask the teacher in the class to answer the questions as many times as you want. I am sorry, my dear teachers, even if the teacher feels irritated, let him or her be as much irritated as you can. But at least get the answer to your question. If you do not get the answer to your question, request for next day, request till next day to answer. This will improve both. This will improve you as well as your teacher. You get improved because you get the answer to that question where you have a curiosity to know. The teacher will improve because if he does not know on the first day, then at least he or she will come to read from home, from books, from somebody, to at least reply to you next day. And a good teacher has a habit. If he is not able to reply to you on the very first day of your question, if he is a good teacher, he will say, my dear young friend, I am not too late. Let's wait, tomorrow we will discuss. Tomorrow the teacher will come prepared for that answer and will reply. So you develop a good process of understanding communication. This is intercommunication between you and the teacher. You learn about it. This, it may look like to you that whatever I am saying is very superficial, but it has a deep sense. When you leave this institution, all incidents which I say will be remembered. Then second is devotion. Every student should be devoted to what the director sir said, that you should be devoted to the institution from here. उस खेती को आप नमन करिए जहाँ से आपको अन्न मिलता है. I said to you that this is the place where your career has come. The career means where you are sowing the seeds of your life. And this is the institution which will lead you to the highest. Right? I also joined an institution unknown in the sense. And I am still dedicated to that institution. Whenever I stand, I go to that institution still. I started my legal career from the legal Muslim University, did my LL.B and LL.M from that place. So I still stand and pay my obeisance to that university, where I have learned the law A, B, C, and D. Whatever the galvanization of the superficial part of that, I did from different universities.
So this university or this college is the basic college for your learning of law. Dedication is this one. Dedication is like you are not alone. You are in a family now. You have senior students, you have junior students. You have to go together. You can take help from your seniors and you can provide help to your juniors. That is the cohesion. Our system where you have to go together. If you go together, nobody will disturb. When we say togetherness, then it means that institutional medals, institutional laurels, institutional betterments will come. Gold medals will come to the CPJ, provided we are all together. If we are separate, no gold medal will come. Howsoever hard the teacher may work. So if you are seniors and juniors and all together in a family, so you have to create an environment, it's your job, so that you live in a family. No animosity, no competition which is negative, all positive competition. Then determination. The determination is very important. Determination is, how many of you are from UP, sir? May you please raise hands. UP से कितने लोग? बस एक ही. मैंने एक ही नहीं हो सकता. ऐसा कैसा? 24 करोड़ की आबादी में एक हमारे. कितने लोग हैं यूपी? आप तो 4-5 तो पहले. आप टीचर हैं? पहले से हो ना. मैंने यूपी से वो आधा लगी जिंदगी कल्चर है यूपी लास्ट स्टूडेंट्स का whether it's from Banaras, it's from Maliga, it's from Allahabad, उनका provision ही अलग हो. Legal admission, law admission, there means judicial. पहले दिन से. So they are least dedicated to their legal studies. They are dedicated to the साहब हम जय साहब का. वो अलग बात है, बाद में जय साहब को क्या होता है. पर जय साहब बनना जरूरी. उसके उनके अपने रीजन होते हैं. मैं लाइटर तौर पर एक रीजन बता दूं. डॉवरी भी एक रीजन है उस चीज का. फ्रेंचाइज को ज्यादा डॉवरी मिलती है और बाकियों को कम मिलती है. आई सीन माय ओन कलीग्स जिनके बच्चे हमने पढ़ाए यहाँ दिल्ली में. पूछा गया आप क्या करेंगे? नहीं ये जुडिशरी करेंगे. यहाँ पर एक होता है. My request to all of you is, please do not deflect your aim at this point of time. अभी आप पढ़ लीजिए. अभी आप कम से कम 4 साल तो पढ़ लीजिए ना. आप पहले साल ही राहुल कोचिंग सेंटर में जाते हैं, एम्बिशन में चले जाते हैं. ठीक है, वो कोचिंग सेंटर जिसमें कल बाढ़ आई वहाँ चले जाते हैं. आपके माँ बाप के पास पैसे बहुत होंगे, but that's a reflection of your career. फिर तो आप अपने कैरियर के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने साथ धोखा कर रहे हैं. क्योंकि आप बच्चे हैं, पहले सारी कोचिंग सेंटर में बंदा चला जाए, he has nothing. वो तो उसको तो पता ही नहीं मैं क्या. He doesn't know the seed where from he has been grown. तो कच्चेपन में ना जाए. कम से कम 5 में से 3 साल के बाद आप कोचिंग, जब आपने कम से कम बेसिक कुछ लॉज तो पढ़े, वहाँ वो लॉज प्लॉट कराएगा आपका समझ, एक्सेप्ट पैसे आपको देने. सो वो एक डिविएशन होती है. डोंट टेक डिविएशंस इफ लॉ इज योर कैरियर, बट दैट डज नॉट मीन दैट योर कैरियर इज शट ऑफ. Once you complete your law or you are at the brink of completing, you have vast field. लॉ में आप गलती नहीं. मैं कितने चीज बता दूं. मेरे नंबर पहले आएगा यूपीएससी शुड बी एट द टॉप. आई हैव सीन पीपल, वेरी लीस्ट पीपल, मैंने शायद बाइक में भी बोला, वेरी लीस्ट पीपल आर वेटिंग फॉर यूपीएससी. यानी क्या, जबकि लॉ प्रिलिमिनरी में भी है, लॉ फाइनल में भी. देखिए तो लॉ वाले होते नहीं. सोशियोलॉजी वाला है, इंजीनियर आ जाए, मेडिसिन वाला एमबीबीएस करके भी आईएएस होता है.
ये हमारे लाभ वाले बच्चे हैं, क्योंकि लोग शायद हमें पढ़ाना नहीं आता है, ये भी एक रीजन हो सकता है। बट प्लीज मेक इट एज अ पार्ट ऑफ कैरियर। ऐसा नहीं है कि वहाँ चांस नहीं मिलता। कोई बिहार से, बंगाल से या जे से आपको बोलेगा भैया बहुत टफ है। ये टफ है क्योंकि वर्ड्स आर TOUGH, उसके लिए हमारे लिए nothing is impossible, right? Or if I use a quote, that impossible is written in the dictionary of words. Whether it is IAS, whether it is UPSC, whether it is your state services, appear for all competitions. You have a chance to be over and above 50%. 50% आपने पहले से कमाए, आपको डर लगता है बाकी 50%। जुडिशरी इज यूअर्स। ये जुडिशरी एक ऐसा एरिया है जिसमें सोशियोलॉजी वाला बेचारा नहीं आ सकता, हिस्ट्री वाला नहीं आ सकता। दैट कैरियर इज यूअर्स। टीचिंग प्रोफेशन इज यूअर्स। आप देखें कितने टीचर हैं, हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स भी टीचर होते हैं। You can find out there is a job in the police for you where they have a specialization in laws. There's a job now as a judicial clerks. अब तो सुप्रीम कोर्ट के हर जज को 4 क्लर्क्स रखते हैं। उसमें थोड़ा कंपटीशन होता है, but थोड़ा कंपटीशन means what? If you are able, you can cross it and you will do it. कौन सा ऐसा बात है जहाँ लाज नहीं है? डायरेक्टर साहब फाइनेंस से है या इकोनॉमिक्स से है, फाइनेंस से लॉ, हाफ ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज फुल विद लॉ। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ तो है ही लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ होम में भी लॉ है। टेल एनी मिनिस्ट्री वेयर लॉ इज नॉट, आई मीन एनी डिपार्टमेंट वेयर लॉ इज नॉट। इतना बड़ा कॉलेज है, भगवान इसको और बड़ा कर ले, पर इसमें भी एक लॉ वाला होगा जिसको लीगल एडवाइजर ऑफ द CPJ। आप लगाइए नहीं, आपके लिए पूरा दुनिया है, लेकिन आप कोशिश करिए कि वो जगह बदले। ठीक है, मैं एक शेर बोलूं, शायद आपको कुछ जोश आए। खुद ही को उठकर बोलन इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा मुझे से कुछ पूछे, बता तेरी रजा क्या। This is determination. If you are determined that you have to get a career in law, तब तो खुदा आपसे खुद पूछेगा, बताओ मैं कौन सा कैरियर आपका। लेकिन अगर आप गूगल पढ़ेंगे, दुखी पढ़ेंगे या चुप्पी पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं आप, भगवान जाने, तब तो कैरियर हो, तब तो चौपट हो गया, कुछ चिंता नहीं। पास आप हो जाएंगे, वो कोई बात नहीं होती, लाभ में कोई फेल नहीं, कॉमन फेल। जब हम भी थे, हमारे सीनियर कहते हैं परेशान क्यों, लाभ में कोई फेल नहीं होता। बात तो वही है, लाभ में कोई फेल नहीं होता, लेकिन लाभ में बेटा कैरियर बनाना इज इम्पोर्टेंट। वो कैरियर बनाना कभी टाइम लगता है, कभी कुछ लगता है। मैं तो अपनी मिसाल आपको दे दूं, लोगों को क्या बोलूं। I am from a very humble family. I am a villager basically. I used to live in one part of Himachal, and I am the second generation of my family who are qualified in the sense who have read beyond 10 class. You can understand the difficulties of mine from village to a college, and from that college to the university. I had to find the law education myself, and I found it accidentally, not incidentally, accidentally. Somehow I got it. The day I joined law, I mean LL.B, believe me, I developed a curiosity to join the LL.B still. So I completed my LL.B and LL.M together from Aligarh University without leaving the university. That was a sort of my curiosity, dedication. And God willing, I got my first job in the same university, in the same department where I was. Right? I moved
differently to different places, right from national to international. That is the difference. But it is that if you have a dedication, you want to be there, then you will do it. उसमें आपके दो चीजें हैं, आपकी भी चांदी और CPJ की भी चार चांद बन जाएंगे अगर आप कुछ कहते हैं। देखिए हमारे मेडल जितने जीत के आ रहे हैं, ताली हरियाणा नहीं बजाता, ताली सारा देश बजा रहा। क्यों बजा रहा? क्योंकि वो देश के बच्चे। इसी तरह CPJ नहीं बजाएगा ताली, सारी लीगल फ्रेटर्निटी ताली बजाएगी। गुजरते कि आप कुछ करके वो करना क्या है? लव टू बी वेरी सिंसियर एंड डेडिकेटेड। ऐसा नहीं कि मंडे को क्लास आएंगे, ट्यूसडे को डैडी की तबीयत खराब, वेडनेसडे को किसी और की तबीयत खराब, या कई लोगों के ग्रैंडफादर 4 बार मरते हैं साल में। ये भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होगा पता नहीं। मेरा तो एक ही ग्रैंडफादर था, कहीं के 4-5 होते हैं उनके गाँव में, तो क्यों नहीं आए? और 4 दिन मेरे दादाजी की 2 महीने बाद फिर पूछो तो फिर दादाजी की। अच्छा 6 साल में तो 4 दादा बनता, ये नहीं चलेगा। If you are absent from your class, you are absent. Because we can expect from the teacher that he will do our best. He will do his best. But वो best कहाँ जाना? If you are not there, the best will not be there. And consistency is very important in law. Law board is real. It's not mathematics, where you have read A plus B the whole step. And then you derive a formula from one place to another. Law is a well-lived thing. Particularly, एक दूसरी बंदी में और भी है, वो मैं गोस्वामी साहब से माफी चाहता हूँ। इन्होंने सारे कोर्ट्स नहीं रखे, अरे कोर्ट्स आगे पीछे कर। टेक द सुप्रीम कोर्ट में विशाखापट्टनम, कम से कम हमारे बच्चों को मुसीबत आ रहा है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट बैठता सुबह से शाम तक 5 जजमेंट। कभी ऑब्जर्व कर लीजिए, आज टीवी लगाए देखें, लिस्टेड होगा आपको कि आज 4 इश्यूज पर जजमेंट आए। And a student from Delhi should know all 4 judgments. If he or his teacher does not know, then he has no right to be there. यही quality education है आपके। We cannot expect the same quality of education from यूपी बोर्डा से आता होगा, वो टीचर के पास तो जजमेंट पहुंचेगी कमरा। आपके पास तो ताज़ा क्वेश्चन, अभी वहाँ जज बोल ही रहे हैं, आप सुन रहे हैं। So you have to be very alert. I can eat उसको चील की तरह। अभी कहीं आपने टुकड़ा देखा कि आपने जबड़, That is a fortune. आप खुशकिस्मत है, आप देंगे, आपको सारा कुछ मिलता है, क्या नहीं मिलता। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स आपके पास, लॉ कमीशन के सारे रिपोर्ट्स आपके पास, सुप्रीम कोर्ट आपके पास, डायनेमिक हाई कोर्ट आपके पास। मेरे ख्याल में आपकी बात कितने सब 70 जजेस होने चाहिए, मोर देन दैट। आई थिंक व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट देयर वर 48 जजेस। यू कैन अंडरस्टैंड वेयर यू आर। और इस सिचुएशन में भी इफ यू कैन नॉट रीड द क्रॉप, देन ये हमारी बदकिस्मती है, आपकी तो है ही हमारी। फिर हम गलत जगह है, गलत चीजों को पढ़ा। हमने आपको इसलिए लिया कि हमने देखा कि आपने आंखों में एक शाइन है अचीव करनी, शाइन है पढ़ने, उसी शाइन को और आप बेहतर करना चाहते हैं। उसी वजह से है ना कि हम ऑल इंस्टीट्यूशंस आर टेक द बेनिफिट ऑफ दिस। जब हम दिल्ली में जब आई डिड द रिसर्च, यहाँ कोई मेट्रो पेट्रोल, मैं यहाँ भी आया हूँ, आई थिंक सो, और मैं सर्वे बस का किराया होता था 30 पैसे, वो बस अंदाजा करके कितना टाइम लगाती है। आज तो आपको अगर रिसर्च करना है छोटा मोटा है, whether it is micro or macro, तो आपको मेट्रो को बैठना है, उतरते एक कॉफी, चढ़ते हुए 4 मिनट, और आपने रिसर्च कर लिया। ये विजिटेड बाय इंस्टीट्यूशन में आप तो अगर आप ये नहीं कर पाएंगे, अभी आप नहीं सीखेंगे। सपोज और 1 साल के बाद ये सारी चीजें आप, लेकिन नंबर
Law is not being and should not be taught in the classroom. Law is a different dynamic. Law needs to be taught in the courtrooms. मैं अगर कोई टीचर हो तो मेरा कहना माने, अगर ट्रायल चल रही हो, खास ट्रायल चल रही हो, he or she should take the students to that trial court, can understand as to what is being asked. आप ये भी देखें ना कभी-कभी हो सकता है कि जो लायर आर्ग्यू कर रहा हो, आधा क्रिमिनल आर्ग्यू कर रहा हो, आदत पड़ी नहीं मेरे साथ, तो नया याद हो गया, so you will at least understand how to apply the new thing. How is this being applied? What section is being applied? नई चीज है, आप अच्छी जगह है, आप गाँव में नहीं, आप ऐसे शहर में हैं जहाँ हर सुविधा आपको है. Good teacher is available, good library is available, good communication is available. So take the benefit of that and develop. We are expecting a lot from you. I need not to speak much, कभी भी orientation उल्टा ना हो जाए. मेरे ख्याल में मेरी बहुत है, इतना भी आप समझ जाएंगे तो मुझे लगता है कि जब मैं next time आऊँगा, by the time if I live, that is subject to my life. If I come after 3 years, I should see that you are shining, you are dynamic, you are vibrant, and you are my future prospects of law. I hope you will occupy the platform in the parliament, in the judiciary, and in the other parts of any election लड़ना कोई हार नहीं. Election तो माफ कर लीजिए, जहाँ कोई qualification नहीं ना हो वो भी करता. But election कैसे लड़ा जाए और क्यों लड़ा जाए? हमारे नेताओं की तरह ये नहीं बोली कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो चीज नहीं है, सब चीज. वो कैसे कैसे बोले? तो try to understand the basics. Clear करिए अपनी चीज, so that tomorrow when you speak in society, you speak the character. One thing before I leave is that morality is a part and parcel of it. इसको उर्दू में इखलाक बोलते हैं, ठीक है? और हिंदी में हम दया और धर्म की बात करते हैं. तो जो ला पड़ेगा वो दयालु भी होना चाहिए और धर्मी भी. Otherwise, don't mean that you be Hindu, Muslim or something. That means that you be just. आपको अंदाजा हो कि गुनाहगार को सजा, ठीक है? वो भी justice. We are teaching you not law, we are teaching you justice. हम आपको justice पढ़ा. Justice का मतलब ये है सजा दे दो लेकिन बराबर दे दो. जिसका अत्याचार हुआ उसको भी रिलीफ मिले, उतना मिले कि वो भी सेक्स. We don't say justice means chop off the head. With a good thing there. I wish you best of luck for all 5 years. खुश रहिए, मजा करिए. आज साल आपकी जिंदगी में अगर आप बिताना चाहते हैं, इससे पहले कि आप बिता लें एक नॉवल पढ़ के जिसका नाम अरेबियन नाइट्स, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, कहीं से भी मिले. Please spend these 5 years like Arabian Nights with you in the CPJ. You will enjoy the law, you will learn the law. You will be the father of law. Wish you all the best to all of you. Namaskar. Once again, a big round of applause for the On this note, I invite our Director General Sir and Dr. Amit Jensen and Dr. Shani Tyagin on the stage for the felicitation ceremony of our Chief Guest. इनाम देने के लिए हम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि रैना साहब को इनाम देंगे. दिस इज जस्ट अ जेस्चर कि वो अपना समय निकाल कर आ पाए और हमारे बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं. प्लीज.
the students present here and all the parents, let me take this opportunity of saying thank you. Goswami sir, please, if you can please come on stage. Let us felicitate Goswami sir. पहले बता वो भी ना बोलेंगे मुझे बोलने का भी दिया जा रहा है. And second, Goswami sir, please. Today we are blessed with the presence of Senior Advocate R.S. Goswami sir, ex-chairman Bar Council of Delhi and present member in the Enrollment Committee. Sir has been enrolled in 1987 with the Bar Council and still has an active practice in Delhi High Court. He is a practicing lawyer of criminal and specialization in matrimonial cases. He was elected as a member of Bar Council of Delhi in 2003 and was appointed in the Honorable Secretary of the Bar Council of Delhi in 2006 and got elected as the chairman in 2012. And during his tenure, he has organized various functions. Okay, sir. On this note, I invite you on the stage, please. Everyone, make a round of applause. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। क्योंकि आज हम जीवन का एक नया अध्याय आप लोग शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन आज एक मुझे सबसे ज्यादा एक बात की चिंता हो रही है कि स्टूडेंट ज्यादा है, पेरेंट्स ज्यादा है। या कितने पेरेंट्स हैं, जरा हाथ उठाएंगे आप लोग? और स्टूडेंट कितने हैं? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अभी आपने हमारे चीफ गेस्ट रैना साहब को, रैना साहब एक अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, एक जैसे डायरेक्टरी होती है, डिक्शनरी होती है, उनके पास कानून से बताने के संबंध में इतना सामान है जो फुल डे भी आपके साथ इस टॉपिक पर बोल सकते हैं। जिन्होंने कितनी किताबें लिखी हैं, आपके पढ़े हुए स्टूडेंट आज दिल्ली हाई कोर्ट में जजेस हैं। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा रैना साहब के लिए और हमारे युगान चतुर्वेदी, आपके दोनों के बाद मुझे बोलने का मैं पूछ रहा हूँ, क्या बोलूं, मैं नमस्कार करके हट जाऊं, क्योंकि एक लिबरेटरी है, एक लॉ के मास्टर है, ज्ञान के भंडार है। एक बार खड़े होकर इन दोनों के लिए जोरदार एक स्वागत करिए। थोड़ा आप लोगों को बैठे बैठे थोड़ी देर हो रही है, अभी प्रयास हो रहा है। Thank you so much, please. And students, ये आप देखेंगे आने वाले 5 साल तक, युगान sir stands by his words, absolutely as a mentor and as a guide to you. Could be there next to you, you know, shoulder to shoulder. That's what. Please, thank you. दोस्तों, अभी आप लोगों ने लॉ पे बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ। रैना साहब के मन में अभी भी ऐसा था कि शायद मैं 1 घंटा और बच्चों के साथ जो मेरे पास सामान है, सारा ज्ञान का भंडार आज बांट के रहूं। You all are lucky, you are a wonderful
पर्सन इन योर कॉलेज एज ए डायरेक्टर हेड युगान चतुर्वेदी जी, उनके पास भी उतना ही भंडार है, लेकिन उस भंडार में से हमको कितना लेना है? एक साधु गया महाराज दशरथ जी के पिताजी के पास, महाराज रघु के, कि मुझको 100 असरफी चाहिए। शाम का समय था, तो बोले अब तो लेट हो गए महाराज, सुबह जब कचहरी खुलेगी तब हम आपसे बात करेंगे। जब वो सुबह गए तो राजा ने, महाराज रघु ने अपना भंडार खोल दिया और उस साधु से कहा आप ले लीजिए। जब वो भीतर गए तो उन्होंने वहां से 100 असरफियां ली। तो महाराज ने डिक्लेयर किया कि इस हिंदुस्तान में नहीं, पूरे संसार में मेरे बराबर कोई दानी नहीं है। एक साधु ने 100 असरफी मांगी थी सोने की और मैंने पूरा भंडार खोल दिया। तो साधु ने कहा महाराज आप गलत बोल रहे हैं, मेरा जैसा भिक्षुक कोई नहीं है दुनिया में, मेरा जैसा त्यागी दुनिया में कोई नहीं है कि आपने पूरी असरफी खोल दी, उसके बावजूद भी मैंने 100 की जरूरत थी 100 उठाई है, तो मेरे से बड़े आप नहीं हो। तो ये आपके हाथ में है स्टूडेंट के में कि भंडार में से आपको कितनी असरफी लेनी है, कितना आपको सामान लेना है ज्ञान में से। उनके पास जितना था उन्होंने पूरा लुटा दिया आपके पास, और चंद्रवेदी साहब आपके साथ पूरे 5 वर्ष रहेंगे। मैं आपके साथ ज्ञान की और लॉ की बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं प्रैक्टिकल जीवन का आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। आप जितने स्टूडेंट हैं इससे ज्यादा मैं हर एक हफ्ते के अंदर एनरोल करता हूँ एज एडवोकेट। आप तो स्टूडेंट हैं, मुझे उस बात की खुशी है कि अभी पिछले 4 दिन पहले जब एनरोलमेंट की मीटिंग ले रहा था, तो मैं, क्योंकि मेरा इस कॉलेज से परिवार का सा रिश्ता है, मैं सबसे पहले पूछता हूँ सीपीजे से कितने लोग हैं। तो जब हाथ खड़ा करते हैं कि हम सीपीजे से आए सर, तो मैं कहता हूँ कि युगान जी को जानते हैं आप? तो जो कॉलेज में नहीं आए वो तो अपने माँ बाप को भी नहीं जानते, और जो कॉलेज में आए वो कहते हैं कि उनसे बढ़िया, उनसे काबिल, उनसे होशियार। मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूँ कि एनसीआर की बात नहीं करता, यदि हम एक नेशनल लेवल पर भी बात लेके चले, यू आर ऑल लकी, यू आर ए वंडरफुल पर्सन इन योर कॉलेज। चतुर्वेदी साहब से बढ़िया आदमी आपको, काबिल आदमी आपको मिलेगा। आप लोगों को लगा था कि 1 घंटा वो बोल के चले गए, 1 घंटा इन्होंने ले लिया, फिर गोस्वामी जी खड़े हो गए, लगता है। लेकिन आप एक बात भूल गए, मैं कड़वी सच आप लोगों के सामने दूं। जब आप 12th में आए, अब आपके माँ बाप ने बहुत सपने देखे। किसी ने सोचा मेरा बच्चा एमबीबीएस में जाएगा, किसी ने सोचा मेरा बेटा बीटेक में जाएगा, किसी ने सोचा मेरा बेटा होटल मैनेजमेंट करेगा। लेकिन दोस्तों, जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, उसने सोचा कि मैं LL.B करूंगा। ये महसूस करिए, तो कोई रास्ता नहीं बचा माँ बाप के पास कि भाई इसका लड़का भी लॉ कर रहा है, उसका भी कर रहा है, उसको अपने बच्चे की कैलिबर पता है कि कहां खड़ा है। उसके बाद फिर LL.B के लिए भी आप लोगों ने टेस्ट किए, क्रेडिट का टेस्ट दिया, IIT यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिया, उसमें भी कैटेगरीज बनी। लोग नेशनल लॉ कॉलेजों में गए, भोपाल गए, कलकत्ता गए, जोधपुर गए, दिल्ली NLU गए, हमें एडमिशन CPJ मिला। आपसे भी कैटेगरीज गए, जिन्होंने चौधरी चरण सिंह में एडमिशन लिया, मथुरा गए, राजस्थान गए। कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो कहीं नहीं गए, केवल एडमिशन लिया और एग्जाम देने गए। ये क्वेश्चन सर मैं हर एनरोलमेंट कमेटी में कहता हूं कि आप लोग कहीं गए या नहीं गए मुझे नहीं पता, लेकिन बार काउंसिल दिल्ली आपका सम्मान, आपका स्वागत बराबर कर रही है। हम एनरोलमेंट सबका ऐसा करते हैं, उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। लेकिन आपके पास आज समय है, आप अपने पास्ट को भूलिए और रियलाइज करिए कि हम नेशनल लॉ कॉलेज में क्यों नहीं गए दिल्ली यूनिवर्सिटी में।
आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज 40 से हाई कोर्ट जज है, उसमें से 28 जज 30 जज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। क्या आप एजुकेशन का डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे? हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा, दुनिया में केवल एक फादर दुनिया में ऐसा बना है जो ये चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे बड़ा बने। आज जितने भी पेरेंट्स बैठे, मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूं जो आप सच्चाई से दूर ना रहे, क्योंकि यहाँ के बाद भी आप मेरे पास आएंगे बार काउंसिल में। मैं पिछले 24 साल से बार काउंसिल में चुनाव जीता हूँ, एनरोलमेंट कमेटी में मैं लगातार 24 साल से। मैं एक स्टूडेंट को दिल्ली में 75,000 वकील मेरे हाथ से एनरोल हुआ, दिल्ली 75,000 रियलिटी बता रहे। आप लोग चाहते हैं मेरा बच्चा वकील बने, लेकिन यदि बच्चा को आज छोड़ के जाओगे, घर जाने के बाद जब कॉलेज में आएंगे ही नहीं, तो जितने मेरे जितने शिक्षक बैठे हैं, जितने मेरे प्रोफेसर बैठे हैं, ये किसको पढ़ाएंगे? आई वांट टू गिव एन एग्जांपल। आई केम फ्रॉम मथुरा। मेरा गांव नंदगांव बरसाना मथुरा से 55 किलोमीटर दूर था, लेकिन 7th क्लास में आई हैव डिसाइडेड कि मुझे वकील बनना है। वकील नहीं बनना, बढ़िया वकील बनना है, बढ़िया वकील नहीं बनना, हिंदुस्तान में एक अच्छा वकील बनना है, इसलिए मुझे कॉलेज जाना है। मैं डेली जाता था और वहां के जो कॉलेज के शहर के स्टूडेंट थे वे नहीं आते थे। प्रोफेसर कहते थे कि उस जमाने में तब ये प्रोफेसर नहीं होते थे, परमानेंट नौकरी नहीं होती थी, जो कचहरी में पढ़ाते थे वही कॉलेज में पढ़ा। तो कहते हैं अकेले को कैसे पढ़ाएंगे? सर दिस इज योर प्रॉब्लम। तो हम क्या पढ़ाएं अकेले को? मेरी बात कर लेते, कुछ घर की बात कर लेते, इस तरीके से लॉ किया। और जब मैं एनरोल होने के लिए दिल्ली आया, तब भी मैं अकेला था और उस दिन का मेरा सिंगल एनरोलमेंट है। मुझसे बोला जिस दिन मीटिंग होगी उस दिन एनरोलमेंट होगा। मैं सॉरी सर, मैं आज आया हूं तो आज मेरा एनरोलमेंट होगा, मुझे रात को नींद नहीं आएगी, मुझे वकील बनना है। और एनरोलमेंट एक दिन में कराया और आज 33 साल है कंप्लीटेड फ्रॉम द प्रोफेसर बाय द ग्रेस ऑफ द गॉड। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के अंदर वर्ड ऑफ रिकॉर्ड मैंने कायम किया, मेरा नाम दर्ज है बिगिनिंग। दिल्ली में कोई नहीं जानता था। पहला ही चुनाव लड़ा बात काउंसिल का 2003 में, तो मैं पढ़ के बाहर से आया था, पहला ही चुनाव जीता। और आज भी दिल्ली के वकील मुझे इतना प्यार करते हैं, जुडिशियल अफसर इतना प्यार करते हैं, अनलिमिटेड। दोस्तों, आपके माँ बाप की कल्पना क्या है हमें नहीं पता, लेकिन आपकी कल्पना ये होनी चाहिए कि जब एडवोकेट केवल आज से पहले आप क्या थे? एक स्टूडेंट थे, लेकिन आज यदि आप कोई गलत काम करेंगे तो आपका नाम CPJ से जुड़ेगा, आपका नाम हमसे जुड़ेगा कि एक लॉ स्टूडेंट चोरी करते हुए पकड़ा गया, एक लॉ स्टूडेंट शराब की दुकान पर खड़ा हुआ लड़ता हुआ मिला। कि आज से आपका जीवन बदल जाएगा। दुनिया की उम्र घटती है, केवल एक वकील को वैसे जिसकी उम्र जिसके लाइफ आगे की तरफ बढ़ती है। आज कितनी अवस्था हो गई सर की, लॉ फैकल्टी में भी रह लिए, वाइस चांसलर भी रह लिए, उसके बाद भी अनुभव बढ़ रहा है। वकील 95 तक काम कर रहा है। कौन सा दुनिया में ऐसी नौकरी है जो 95 तक देती है? आपका एनरोलमेंट कल आज आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, कल सेकंड ईयर के होंगे, परसों थर्ड ईयर के होंगे। जैसा तदबीर साहब ने कहा, मुझे बहुत अच्छी लगी बात तो सबसे कहता हूं कि आज आपने एडमिशन लिया है, आप आंख मूंदोगे, पता लगा 5 साल कहां निकल गए आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन पता जरूर लगेगा यदि आप पढ़ेंगे नहीं, पता जरूर लगेगा आप यदि गलत कार्यों में एक्टिविटीज में रहेंगे, पता जरूर लगेगा यदि माँ बाप को तंग करेंगे। लेकिन जब आप कॉलेज आएंगे, मूड कोर्ट में भाग लेंगे, आज फर्स्ट ईयर हो गई, कल सेकंड ईयर हो गई, कल थर्ड ईयर हो गई, और ऐसे ही जीवन में आज मेरी 1 साल की वकालत हो गई, कितने साल की हो गई? 2 साल की हो गई, क्या साल की हो गई? 4 साल की। दुनिया में केवल एक वकील ही है जिसका एनरोलमेंट बढ़ता है। कितने साल के वकील हो गए? 25 साल के हो गए। कितने साल के हो गए? 26 साल के हो गए। आपकी तो उम्र तो घटती है, लेकिन एनरोलमेंट बढ़ता है। ये किसके पास है दुनिया में? वकील के पास। आज से आपके परिवार में, आपके अड़ोसी में, आपके पड़ोस में ये लगेगा कि क्या करता आपका बेटा? सर लॉ कर। जब वकील बन जाएगा, हम कहते हैं एनरोलमेंट के अंदर, आज से क्या लगेगा? कोई पुलिस वाला पूछेगा कहां जा रहे हो, कौन हो आप? सर आई कार्ड है बार काउंसिल दिल्ली का, आई एम द एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कहां है ऐसी ताकत? किसके पास है ताकत? यदि हिंदुस्तान में यदि सबसे ज्यादा ताकतवर है तो आप
आप लोग हैं जो आप में से निकलेंगे, आप में से अच्छे वकील बनेंगे, आप में से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे, आप में से एमएलए बनेंगे, आप में से सॉलिसिटर जनरल बनेंगे। मेरे पास में गर्व से कह सकता हूँ कि CPJ से पढ़े हुए करीब मेरे पास 65 स्टूडेंट निकले, जिनमें से 5 लड़कियां आज भी काम करती हैं और दे आर ग्रोइंग मोर देन 1 लाख रुपीस सैलरी पर मंथ। CPJ से पढ़े हुए, CPJ से पढ़े हुए जुडिशियल अफसर है, CPJ से पढ़े हुए पॉलिटिक्स में है। कब तुम नहीं हो जो सोच रहे हो, वो है जिन्होंने रेगुलर क्लास अटेंड की, जिन्होंने पढ़ा, जिन्होंने ये सोचा कि मुझे अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, मुझे देश के लिए एक अच्छा वकील बनना है। एक लॉ स्टूडेंट हूं मैं, आज ही अपने अंदर ये फीलिंग करिए कि मैं वकील बन चुका हूं। आज महसूस करिए कि मुझे बड़ा वकील बनना है। वकील बनने क्या बड़ी बात है, 5 साल हो जाएंगे, फैल कोई होगा नहीं, जैसा सर ने बताया। इनरोलमेंट हम कर ही देंगे और आपको खुशखबरी दे देता हूँ, 5 दिन पहले तक हम इनरोलमेंट के 15,000 रुपए लेते थे। बाय द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट मात्र 700 रुपए में हम लोग इनरोलमेंट कर रहे हैं। पहली मीटिंग हमारी 17 तारीख को है, आप देखिए। लेकिन आप अपने स्टेटस को मेंटेन कितना रखते हैं, अपनी लाइफ को कितना। इन टीचरों को आप अरे सर फलाने टीचर अरे तो ऐसे मिलते, ये नहीं। आज से महसूस करिए हमारे गुरु है, ये हमारे आज के बाद इनके पीछे हमारे जीवन है। इनको यदि आप सम्मान दोगे तो अपने परिवार को सम्मान दो। पहला सम्मान गुरु का है, गुरु से बड़ी कृपा किसी के लिए होगी। उनकी एजुकेशन मत देखिए, अपनी पढ़ाई देखिए, अपना कैरियर। इनका आप सम्मान करोगे। एक संस्कृत का श्लोक आता मुझे याद कि नमस्कृतम चत्वारः वर्धते, नमस्कार करने से 4 चीज बढ़ती है, सम्मान करने से आयु विद्या यशो बलम। आप सबसे पहले हम इनरोलमेंट में भी कहते हैं कि सीनियर वकील खड़े रहते हैं, जूनियर बैठे रहते हैं। उनको भी बताते हैं अरे कम से कम आपका सीनियर है, यू शुड पे रेस्पेक्ट। आज आप पहले स्टूडेंट हैं, आज के बाद नेक्स्ट ईयर हम आएंगे 2025 में आप सीनियर होंगे। ये तो क्रम है, आप पहले वकील बनेंगे, आपके बाद जो दूसरा वकील बनेगा वो आपसे जूनियर होगा। तो आपके पास कितनी लाइनें हैं? जज बनने की लाइन आपके पास है, लॉ ऑफिसर बनने की आपके पास लाइन है, अच्छा वकील बनने की आपके पास लाइन है, कॉर्पोरेट में जाने के पास आपके पास लाइन है। लेकिन वो आपके लिए नहीं, वो केवल उनके लिए है जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं। आज आप क्या समझते हैं कि हमने यदि आई हैव कंप्लीटेड 37 इयर्स इन द प्रोफेशन, आज हम बैठते हैं, होल्डे काम करते हैं। हमारे जूनियर छुट्टी लेते हैं, हम छुट्टी कभी नहीं लेते। क्यों? हमने अपने क्लाइंट को ये बता दिया कि R.S. गोस्वामी बीमार है, तो क्लाइंट नहीं आए। हमने क्लाइंट से कह दिया कि अगर 4 दिन बाहर है वो नहीं आए। क्लाइंट को आपकी सर्विस चाहिए। क्लाइंट आप पर फेथ करता है, आप पर विश्वास करता है कि मैं अपने जिनको वकील कर रहा हूँ, जिनको मैं फीस दे रहा हूँ। और एक बार बता दूं आप लोगों को, खुशखबरी माँ बापों को सुनना चाहते हैं आप लोग तो अपने लिए ताली बजाओ, फिर बताओ अपने लिए तो बजाओ। इस प्रोफेशन में बहुत पैसा लेकिन आज से नहीं। मैं तो जो स्टूडेंटों को इन्वाइट करता हूं, जिस दिन उसी दिन ये कहता हूं कि शाम को भी क्लाइंट आए तो पैसे पकड़ लेना, छोड़ना ही मत। और 3 आदमियों से ज्यादा पैसा लेना। सर मैं एक रिक्वेस्ट करूं, 3 आदमी। बोले कौन? सबसे पहले जो रिश्तेदार वो सबसे ज्यादा तंग करेगा। मीठा बोलो उसे, नाश्ता कराओ लेकिन फीस दुगनी लो। नंबर 2 पड़ोसी, वो सबसे ज्यादा तंग करेगा, तो खाना खा रहे घंटी मार देगा। तीसरा आपका दोस्त जो कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, जो 3 लाख रुपए महीने में खा रहा है, पूरी फीस लो, 4 गुनी फीस। क्या पागल है? हम लोग कर रहे हैं, वहां की कमा रहा है, हम थोड़ी कमा रहे थे। तो इस प्रोफेशन में पैसे की कोई कमी है केवल आपकी कैपेबिलिटी की, आपके हार्डवर्क की, आपके मेहनत। मैं गर्व से कहता हूं एज इन टुडे मेरे साथ 47 लोग ऑन सैलरी, नॉट सैलरी कहूंगा, रेम्यूनरेशन कहूंगा, बेसिस पे काम करते हैं। 16 लाख रुपए पर मंथ ऑन रिकॉर्ड देता हूं उनको सैलरी बेसिस। मुझे गर्व है इस बात का कि मुझे मिले या ना मिले, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं जब 20 तारीख क्लियर हो जाती है कि इनकी तनख्वाह जरूर निकल जाए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। दोस्तों आज से आप ये सोचिए, एक और नई सिस्टम चल गया है कि जाते भी कोर्ट के लिए वो जाना है, इंटर्नशिप करनी है।
इंटर्नशिप का मतलब है उस पीरियड में आप, मैं कभी कोर्ट में नहीं भेजता, कहता हूं कि साथ बैठिए, ड्राफ्टिंग सीखिए। ड्राफ्टिंग इज द सोल ऑफ द लॉयर, क्रॉस एग्जाम इज द सोल ऑफ द लॉयर। क्वालिटी है वकील की। ड्राफ्टिंग आती नहीं है, कोर्टों में घूम रहे हैं, एक वकील के संग 50-50 लड़के जाके वो अपना कोर्टों में खड़े थे, तो फाइल का पता नहीं हम किस केस के अंदर खड़े, क्या लॉबी करेंगे। तो जब भी आपको मौका मिले कोशिश करिए कि जब आपको यहाँ से समय मिलता है इंटर्नशिप के लिए, कहिए सर हमें ड्राफ्टिंग सिखाइए। कोर्ट जाने के प्रोसेस भी देखिए, कैसे जो मुंशी काम करता है वो काम आप करिए। और आज के बाद कभी ये महसूस मत करिए कि मैं तो लॉ का स्टूडेंट हूँ, मेरी सेकंड ईयर हो गई, थर्ड ईयर हो गई, अभी तुम कुछ नहीं हो, कि पूरा जीवन लगने का है। हम आज भी हम परिपक्व नहीं है। हमसे कोई कहे तुम परफेक्ट है, नो, हमें हमारा क्लाइंट समझ आ जाता है। आज से पहले हम क्लाइंट से ब्लैंक साइन करा लेते थे, जो इंग्लिश में लिख दिया उसी पे। आप तो हमारा क्लाइंट इतना इंटेलिजेंट है, सेमीकोलन तो खुद लगाता है। तो आप ये मत सोचिए, आपको अपने क्लाइंट से 10 गुना ज्यादा कार्य होना पड़ेगा, तब क्लाइंट को कंट्रोल करोगे। आपको सामने वाले से, आप जितने भी बैठे हैं आपके फ्रेंड बन जाएंगे। अब देखना, कैंटीन वाले फ्रेंड्स अलग हैं, पढ़ने वाले फ्रेंड्स अलग हैं, घूमने वाले फ्रेंड्स अलग हैं। जिस समय आप कंप्लीट करके चले जाओगे, तो आपने अभी ओलंपिक देखा, वहां एक ही कंट्री की 2 सिस्टर्स एंड में जाकर दोनों रह गई, सिल्वर और गोल्ड के लिए। छोटी जब ये कहती थी कि तो दीदी तुम आओगी तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन, बड़ी कहती थी कि आई हैव नो ऑब्जेक्शन। मैं हमेशा इस उदाहरण को कहता था, वो सिद्ध हो गया। दोनों बहनों ने अपने लिए लड़ा, ना कि एक बहन ने दूसरे के लिए लड़ा। तो दोस्तों, ये वो प्रोफेशन है, कोई किसी के लिए काम नहीं करता, कोई किसी का फ्रेंड नहीं होता। यहाँ केवल एक कैंटीन फ्रेंड होंगे कुछ देर के लिए, लेकिन जब आप प्रोफेशन में रियल लाइफ में आओगे, तो जिसके पास काम होगा वही वकील होगा, जिसके पास वर्क होगा, जिसके पास नॉलेज होगी, वही वकील होगा। तो आज से मैं बहुत समय आप लोगों पर नहीं लेते हुए, फिर समय आएगा जरूर आऊंगा। ये मेरा परिवार है, कभी मेरे लायक कोई भी काम आपको हो, कोई चीज समझ में नहीं आती हो, नंबर ले लेना यहाँ से। कभी कचहरी में कहीं कोई दिक्कत आती है, क्लाइंट तो तुम अभी से पकड़ना शुरू कर, फीस ले लो, सीनियर को दे देना, कोई दिक्कत नहीं। महसूस करो आज से कि हम वकील बन गए। लेकिन उसके लिए आपको तपस्या, आपको मेहनत, एक फीलिंग, कॉलेज में आना, अपने प्रोफेसर्स का, उनका सम्मान करना, उनकी इज्जत करना। कौन ज्यादा बढ़िया पढ़ाता है, कौन कम बढ़िया पढ़ाता है, ये आपका काम नहीं है। वो जो पढ़ाता है उसी को आपको पढ़ना है। कोई चीज समझ में आपके में नहीं आती है, उसको आपको देखना है। आपका समय कैसे बदलेगा? कहते हैं जिनके आते ना थे जवाब, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, जिनके आते ना थे जवाब, उनके सलाम आने लगे जब वकील बन जाओगे। जिनके आते ना थे जवाब, परिवार में इज्जत बन जाएगी। तुम्हारे घर के सामने जो गाड़ी खड़ी करते थे ना, वो हटा देगा कि इसका लड़का वकील बन गया, इनकी बेटी वकील बन गई। जिनके आते ना थे जवाब, उनके सलाम आने लगे। वक्त बदला तो मेरे नींद में भी मीठे आम आने लगे। तो आपका वक्त आज से बदल रहा है, कि केवल आपको महसूस करने के लिए, महसूस करो मैं वकील बन गया। ये महसूस मत करो कि मैं लॉ का स्टूडेंट को अभी तो फर्स्ट ईयर है, नो, मैं वकील काले कोर्ट की गारंटी में देता हूँ, एनरोलमेंट की गारंटी आपको देता हूँ। पढ़ाने की जिम्मेदारी जो मेरी बहन सिस्टर्स बैठी हुई है, ये आपको गारंटी देती है। डिग्री की गारंटी चतुर्वेदी साहब देते हैं, और ज्ञान की गारंटी रैना साहब देते हैं, वकील बनाने की गारंटी देते हैं। सब्जेक्ट टू कंडीशन, सम्मान, प्यार। वकील का मतलब ये होता, जैसे सर ने भी कहा था कि हम मकान किराए पे ले, नहीं लेना पैसा। बोले क्यों? बोले वकील बन गए। पड़ोसी को पीटना क्यों? क्या मैं वकील। आपका समाज में वो स्थान होना चाहिए कि यदि आपके पड़ोस में विधायक आता है तो पूछे कि वकील साहब का घर कौन सा, काउंसलर आए तो पूछे कि वकील साहब का मकान कौन सा, समाज का व्यक्ति आए तो पूछे आप कौन है। केवल हम वकील एनरोलमेंट नहीं करते, हम वकीलों का लाइसेंस भी खारिज करते हैं। जो हिंदुस्तान के टॉप पोस्ट रह रहे हैं, वकील अपने क्लाइंट के साथ किसी तरह का मिसकंडक्ट करता है, लाइसेंस भी कैसे करते। इसलिए दोस्तों, हम एक कानून से बंधे हुए हैं, संविधान से बंधे हुए हैं, एडवोकेट एक्ट से बंधे हुए हैं। और आज से केवल ये महसूस करके जाएं, अपने माँ बाप के सम्मान करें, उनका पैर छुए, सेलिब्रेट करें। आपको 2 दिन सेलिब्रेट करना है, एक आज, एक जिस दिन आप वकील बन जाए।
ये महसूस करें कि आज आपने जो आम का पौधा बोया है, ये सोचे कि आम तो कभी आएगा ही नहीं, फिर आम का पेड़ क्यों लगाते हैं? ये आम का पेड़ आज लगा है, इसका फल आपको 5 साल के बाद मिलेगा और बहुत ज्यादा फल जब मर्सिडीज बड़ी बड़ी गाड़ियां आपकी होगी वो और 5 साल आपको लगेंगे। उसके लिए मैं आज आपको शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि एक समय फिर आएगा, जैसे आज आप फर्स्ट डे आए हैं, एक दिन 5वीं साल होगी जब आप लोगों के साथ ये कहेंगे कि आप वकील बन गए, तब आपको मॉरल एथिक्स पे डिस्कस करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सारे परिवार वालों को मेरी तरफ से मुबारकबाद और पूरे जो नए स्टूडेंट्स हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे सामने जितने भी यहाँ शिक्षक बैठे हैं, प्रोफेसर हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। और रैना साहब आपसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा और चतुर्वेदी साहब का मैं फैन हूँ, इसलिए मुझे बहुत खुशी उनको सुनने के लिए होती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। Thank you so much, sir, for inviting the gathering with your words of encouragement. एक बार फिर से I really want you all to stand up and honor our chief guest and guest of honor for today, and for giving us such motivation and ethics. Thank you so much, sir, for being with us today, Raina sir and Goswami sir. Everyone, a big round of applause. Thank you, everyone. Please take this. Projector. Students, now we are taking you to your ceiling with the academic journey with a small PPT presentation from the School of Law. Okay, gathering, our chief guest and guest of honor is David. Just kindly please stand up, please. Thank you so much, sir. Sure, sir. Thank you, Raina, sir. Everyone to kindly take the seats. I request all the law faculties to kindly sum up at the right side of the auditorium. And if some colleague is missing, I really request all faculties to kindly call them right away, please. We are going to start with the PPT presentation. I sincerely request if any law faculty is missing to kindly come in the auditorium, please. Raina and Chancellor, kindly please any law faculty is missing. R.S. Students, now it's time for the PowerPoint presentation on the brief of the School of Law. Now I will invite Ms. Sunita Sharma, Department Coordinator, BBA and LL.B. Ms. Sunita is a seasoned academician, professional currently serving as Department Coordinator in School of Law, where she has been contributing from past 8 years. She has pursued an LL.B. from Guwahati University and LLM in Constitutional Law and M.Com from Guwahati University as well. And she is currently pursuing PhD from Gita University, Panagarh. On this note, I invite Ms. Sunita Sharma on the stage, please. Everyone, a big round of applause for Department Coordinator, Ms. Sunita Sharma. And now I invite Ms. Shivali Rawat, Program Coordinator, BBA LL.B. and BBA LL.B. program. Ma'am is a seasoned academic professional currently serving as a program coordinator in CPJ School of Law, where she has been contributing from last 4 years. She has been pursued a BBA LL.B. from GGSIP and completed her LLM in Corporate and Business Law from Gujarat National Law University. She is currently pursuing PhD from Jyoti Vidyapith Women's University and so has had the experience of 3 years in litigation and arbitration. On this note, ma'am, I welcome you on the stage, please. Everyone, a big round of applause.
journey. As you all know, that Chancellor College of Higher Studies in School of Law was established under the Agnes of British Organized Education Society in year 2007. And ISO certified and bar council recognized under the government of NCT of Delhi. As it is affiliated from the Goswami in the Cluster University, the college is offering the courses like BBA, BBA, CAM, BCom, BCA, BA LL.B, BBA LL.B, and the postgraduate course LLM. The college is situated in our own spheroid and acre clustering with the alternate modern facilities with air conditioning and state-of-the-art infrastructure in Narela, Delhi. Let's have a brief about all the main pillars of CPJ. Dr. Yugam Chaturvedi. Sir has an honorary doctorate from the University of Southern France and a postgraduate from economics from Delhi School of Economics, Delhi University. Sir has overall experience of 37 years and serves in the corporate sector. And has been motivating us for all the mock interviews and giving up the placements and the corporate under his guidance. Dr. Josna Sinha, Director CPJ CHS. Dr. Josna Sinha is esteemed director, holds a doctorate in computer science and engineering from UPTROU, Allahabad. She has also possessed a postgraduate degree in computer application along with the MTech degree in computer science and engineering with a remarkable tenure of overall 22 years in teaching and more than 12 years in administration, and she brings a wealth of experience to her role. She has contributed significantly to the academic research with 23 and more than publications in national and international journals as well as in the conferences and seminars, etc. Dr. Amit Jain, Director of Corporate Affairs. Sir has an overall experience of more than 22 years in academia and corporate sector with an outstanding academic record with a product of prestigious systems throughout. He has obtained his PhD, MTech and BTech in Electronics and Communication Engineering and also has a PhD in Management from MD University Noida and done his MBA from IIT Ghaziabad. He has published more than 81 research papers in reputed journals and proceedings in international and national journals. Dr. Jain is an educationist, a teacher, an innovator, and a strategist to the committed philanthropist. Dr. Shami Tyagi, Principal School of Law, is associated with School of Law and her academic qualification is BA LL.B, LLM, MPhil, UGC NET, and PhD. She has total experience of 19 years and court practice experience. Her area of interest is family law, criminal law. She has published more than 30 research papers in reputed international and national journals, presented papers in 74 national and international seminars and conferences, and attended 100 webinars, and she is also a member of Moot Court Committee and various other committees. Dr. Shweta Gupta, Dean School of Law. She has more than 18 years of experience including teaching and administration. As far as education qualifications are concerned, she has a PhD, MCom, an MBA Finance and NET chair. Throughout her academic career, she has published 25 research papers in national and international journals, attended conferences, and took part in PGPs, FPPs, and she has been a member of Educational Board, National Research and Journal Publication. Ms. Sunita Sharma and Mr. Vali Rawat, I'm already introduced with you all. Now I invite them on the stage for further. Ma'am, kindly come on the stage, please. Hello everyone, and a very good afternoon to everyone here, all present here, parents and students. I'm Shivali Rawat. Thank you so much, Shri for such a generous welcome. And I'm Assistant Professor, CPJ College. I'm associated with the college for the last 4 years, and I am the Program Coordinator for BBA LL.B as well as BBA LL.B. I would like to share with you a few lines that I really believe in. Education is not just about gaining textual knowledge or writing exams, but it is all about self-awareness and acceptance of the world at large. So with this note, I would like to introduce my colleague. A very good morning to all my dear students and parents present over here. Myself, Sunita Sharma, Department Coordinator, School of Law. We both will be helping you in your entire journey of 5 years. If you have any query related to your academics or you are facing any problem, then you can always feel free and contact us. Our room number is 206 second floor.
We are always there to help you all in your entire 5 years journey. So, with this note, I would like our faculty members as well as you to kindly come up on the stage and introduce yourselves. Kindly maintain the decorum as well as try to keep your phones on silent. This is the first time you're going to meet your faculty members. Sir, I request you to kindly turn off the projector for a while and turn on the lights, please. Thank you. Please turn off the projector. So let's start with the introduction. Yes, sir. Good morning, good afternoon, all of you. Myself, Shahab Hussain, Assistant Professor, School of Law, with a 4+ years of experience. I, in CPJ, teach criminal laws. Currently, I am pursuing PhD. And lastly, I want to say, you small steps towards your goal leads to a big success. So work hard and all the best. Good afternoon, everyone. I am Manish Kumar, Assistant Professor in School of Law. I have done M.Com, CMA, BA, and I have 7 years PhD experience in the field of accounting, economic taxation. I will be teaching to all of you. In the end, I want to say something to all of you. Nothing is possible. Everything can be possible if you want to get what you want to do. And in last, it's all depend on you. Thank you. Welcome to CPJ. Good afternoon, everyone. I am Supriya Singh, Assistant Professor of Law, CPJ, School of Law. I welcome you, everyone, in CPJ family. And I want to share one thing, that trust and value your time. Thank you. Hello, welcome everyone. I am Yashwant Gautam, Assistant Professor in Law. I will be teaching in School of Law. I have completed my Masters. I would like to share one thought that if you fail, never give up, because fail itself says first attempt in learning. Thank you so much for listening and coming on. Thanks. Good afternoon, everybody. My name is Ravikant Dixit. I have 5 years experience of teaching. I am assistant professor here. I would like to say one thing. परिश्रम का बच्चों कोई विकल्प नहीं होता. Thank you. Good afternoon, everyone. I am Shweta Sharma, Assistant Professor in School of Law. Currently, I am pursuing PhD. I would like to share that every day is a new opportunity, an opportunity to learn, grow, and make a difference. Thank you so much and welcome you all. Good afternoon, everyone. My name is Vinay Singh, Assistant Professor of Law. I have a Master's degree in Law and I have a 2 years teaching experience. Now that you are a part of CPJ family, just remember one thing, that think big, work hard, and make it happen. Welcome to the CPJ family. Good afternoon, everyone. My name is Neerja, Assistant Professor of Law. Currently, I am pursuing my PhD, and my area of specialization is criminal law. Today here, I would like to convey: stay motivated and focus on your goals. Thank you, and welcome all to CPJ family. Good afternoon, everybody. My name is Muskan, Assistant Professor of Law. I welcome you all as a CPJ family. Good afternoon, everyone. My name is Riddhi Chadha. I am Assistant Professor in School of Law. My specialization is in Constitutional Law. The one thing I want to advise you all is in Bhagavad Gita, Lord Shri Krishna says in chapter number 2, verse number 47, Karmanyavadi kalaste ma phaleshu kadachana, which means that they should focus on our prescribed duties and not on result. For example, right now our prescribed duty is to study and to work hard. So we should focus on that rather than on the result. Thank you so much. A very good afternoon, everyone. My name is Rahul D. Chauhan. I am an Assistant Professor of Law in CPJ College. I am currently pursuing a PhD in Law. As well, I possess 3 years of teaching experience and 1 year of litigation experience. I would extend a very warm welcome by saying that education is the most powerful weapon you can use to change the world. Welcome to CPJ family. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Dr. Jaypal Arye. I am Associate Professor here and have a long experience of teaching. यहाँ ओरिएंटेशन प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को बहुत ही उत्साहित और ईगर महसूस कराते हैं और मैंने ऐसे कई ओरिएंटेशन प्रोग्राम अटेंड किए हैं जिनमें मुझे पता चला है
कि यदि कानून के छात्रों के लिए ये 6 गुण उनके पास हो जाते हैं, वो संग्रहित कर लेते हैं, तो सक्सेस स्काई इज द लिमिट फॉर देम। जैसे कि उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये चीजें हमारे अध्यक्ष महोदय हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि उद्मेले ही सिद्धंति कार्याणि में मनोरथी न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्राविशन्ति मुखे मृगा। सोए हुए सिंह के मुख में मृग का शिकार नहीं आ सकता है। इसलिए हमारे अध्यक्ष महोदय हमें याद दिलाते हैं कि उठो, जागो, खेलो, कूदो, खूब पढ़ो और जीवन में आगे बढ़ो। धन्यवाद। Good afternoon, everyone. I am Himachal, Assistant Professor at CPJ School of Law. I am UGC NET qualified. I will be here to guide you throughout your journey. All the very best. Good afternoon, everyone. My name is Dr. Nilesh Kashyap. Basically, I was in litigation. I have more than 5 years of experience in litigation. I was privileged to work under the AOR, who was appointed by the central government to look into 8 departments of legal dispute resolution. I would like to extend my gratitude to all the higher dignitaries of CPJ group of institutions, because I am privileged to be part of both the schools, basically all the schools of CPJ group of institution. And for students, there are 2 lines that I would like to quote today, and that is, arrogance is the cowboy that talks, but intelligence is the cowboy that shows. Thank you. Thank you so much. Thank you so much for the team faculty for giving a generous introduction. Now I would like to Proceed. Thank you. So you can leave the stage. You can proceed from this side. Thank you. Thank you all the respected faculty members. Now I shall be continuing with the session. So, I will be discussing teaching pedagogy with you that we will be following in CPJ College. So there are, in teaching pedagogy, we mainly focus on 4 major areas. First is student development programs, growth evaluation, ICT-enabled campus and academic events for overall holistic development of our students. So in student development programs, we will be conducting seminar, workshops, course visits, summer internship projects, PSDAs and PDT sessions with our Director General Staff. PDT sessions are basically personality development sessions. With growth evolution, we will be giving case studies, weekly tests, class exercises, report writing and legal drafting. Please kindly stay focused. I think we just heard our esteemed speakers about focus, discipline, right? So let's just start imbibing it from the very first day. Okay. Next, in the ICT-enabled campus, we will be making sure that we'll be using PowerPoint presentations. We'll be conducting academic webinars, value-added courses, legal search engines shall be provided to you, and social networking, of course. Next is academic events. We will be having different competitions like moot court competitions, line counseling, judgment writing, debate competitions, and conferences. For this, we have a separate law fiesta. It's a law fest dedicated solely to the academic events that I just said, right? So further, I would like my colleague, Ms. Sunita Sharma, to take over. Ma'am, over to you. Before starting, I would like to start with a motivational quote. As rightly said by Nelson Mandela, education is the most powerful weapon you can use to change the world.
With this, I will be briefing you about your assessment criteria. Students, please listen carefully. This is very, very important for you all. Plus the important guidelines which you need to adhere while entering into the campus. So to begin with your assessment criteria, a student will be promoted to the next academic year only if such student obtains at least 50% credits of the existing academic year for promotion to next academic year. Distribution of weightage of various components of evaluation shall be as follows. As you all know that IP pattern is of your subject will be of 100 marks, out of which 40 marks will be for the internal assessment and 60 marks will be for the annual examinations. So the 40 marks which is for your internal assessment will consist of your internal examinations which we will conduct from here, plus the assignments which will be given to you all, plus the PhD activities. All this will comprise of 40 marks which will be assessed. And remaining 60% will be your end-term examinations. That is, the paper will be set from the IP university. And you will have to do it, appear for the same. And the pattern of the question paper is that each subject, you all have total 7 subjects. Each subject there are 4 units. So the IP question pattern is that from all the 4 units, 2 questions will be given and you will have to attempt 1 question. This pattern is for your long questions. And for short questions, there will be 6 to 7 questions. Short questions out of which you will have to attempt 4 questions. So be prepared, be focused on the starting itself so that it will help you for scoring your marks because 40 weightage is from the college itself. So you will have to work hard for the 60% in the end-term examinations. Next is your internship reports, dissertation, final year 10 semester students. So you are in first semester but you should know that entire 5 years में आप लोगों के पास क्या होगा. Apart from the subjects, from the 5th semester, 5th, 7th, 9th and 10th semester. In all the semesters, you will have to prepare your internship reports. You will have to go for your summer internships. You will have to prepare the report for the same as well as the court diary to note down the cases which you have attended in the court. So this is for your 5th, 7th, 9th and 10th semester. And when we talk about the final 10th semester, in that you don't have any theoretical subject. It basically consists of only 2 things, that is dissertation and internship. In dissertation, you will choose topic as per your area of interest. You will be allotted a mentor to guide you to prepare your thesis and as well as the internship report. So this is very, very important. So take note seriously from the very first semester. Next, as I told you, you have to adhere to some important guidelines which are very, very important for you all. While entering late arrival of students in the class is not allowed, unless and until there is some mishappening or emergency due to which you are late, we will allow for the same. Otherwise, you will have to attend the classes regularly on time. Second is your early departure of students. Early departure of the students before the completion of the classes are not at all allowed. Unless and until you have any medical exigency, for which you will contact your program coordinator or department coordinator, and if we are not available for XYZ reason, you may contact dean and principal for the same. Next is discipline. Very, very important, as all the guests have already told you that your profession is such that you will have to maintain proper discipline. So while entering into the campus or in the class, my dear students, please make sure that you maintain proper discipline. कभी-कभी क्या होता है क्लास में स्ट्रेंथ होती है स्टूडेंट्स की, टीचर अपने बिल्कुल फोकस माइंड से पढ़ा रही होती है एंड कुछ बच्चे पीछे बैठ के बातें कर रहे होते हैं. So that distracts the students as well as the faculty taking the lecture. So please maintain the discipline in the class as well as in the campus. Next is anti-ragging. As you all are aware, IP की साइट पे भी फॉर्म है रैगिंग का. Ragging of any sort is strictly prohibited inside the campus of the college. If any student is found indulging, if somebody is ragging you, ऐसे तो हमारे college में strictly prohibited. But in case if you are facing any problem from your seniors, do feel free contact to both of us, your program coordinator as well as department coordinator. But rest assured, anti-ragging is strictly prohibited in our college campus. Next is eve-teasing is strictly prohibited. Next is alcohol and smoking is strictly prohibited inside the campus. If you are found drunk of your smoking, then a strict action will be taken and your parents will be informed regarding the same. So please take note of the same very, very, very seriously.
Lastly, as for the GGSIP norms, this is very important point, my dear students, please take note of it. 75% attendance in the class is mandatory. Without any fail, you should maintain that you have attended more than 75% in your classes, because as per GGSIP norms, if you have not maintained the 75% attendance, we will not be allowed to appear in your external examinations. So with this note, your course overview will be given by our Dean, Dr. Shweta ma'am, and your academic journey will be briefed by our Director of Corporate Affairs, Dr. Chancellor. With this note, I would like to say that you all will enjoy your entire 5-year journey with us, and if any problem you are facing, feel free to contact us. Thank you so much. Thank you so much, students, and please make sure that you stay motivated, right? Thank you, ma'am. Ma'am. Thank you so much, Ms. Raina and Ms. Shivali. Now I invite the School of Law, Dr. Shweta, on the stage, please. Respected dignitaries, parents, and dear students, a very good afternoon, CPJ Pranam to all of you. I, Dr. Shweta Gupta, Dean School of Law here to address and describe the subject to be taught in different semesters. आज इस मंच पे मैं पेरेंट्स से और बच्चों से एक बात कहनी है कि आज जैसे पेरेंट्स छोड़ने आए हैं, इट सीम्स लाइक कि जब हम अपने छोटे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं और जितना बच्चा स्कूल के अंदर डरता हुआ घुसता है, उतना ही हम बाहर खड़े होकर इक्वली डर रहे होते हैं कि आज पता नहीं कितना ही डर रहा होगा। सिमिलरली आप सभी आज जब यहाँ बैठे हैं तो आप सिर्फ अपने बच्चे को नहीं छोड़ के जा रहे हैं, एक होप आप छोड़कर जा रहे हैं, एक जिम्मेदारी छोड़कर जा रहे हैं, एक एक्सपेक्टेशन सीपीजे फैमिली से रख रहे हैं कि आज के 5 साल बाद जिस भी सोच, जिस भी उम्मीद के साथ आप बच्चे को छोड़ रहे हैं, वो ऐसा ही आपको मिलेगा। ये बात सिर्फ मैं पेरेंट्स से कर रही हूँ, बच्चों से नहीं, क्योंकि बच्चों से तो पूरे सेमेस्टर्स बातें होती रहेगी। तो मैं सीपीजे फैमिली की तरफ से आपको कमिटमेंट करती हूँ, आश्वासन करती हूँ कि डेफिनेटली वी ऑल द एसओएल फैमिली will committed to fulfill your all the commitments कि आपका बच्चा definitely अपने law stream में अपनी heights को achieve करे। Again, now I will address to students कि यहाँ पे आपका subject details दिया हुआ है। In first semester, all the BA LL.B, it's for BA LL.B students. So BA LL.B students, please pay attention that in first semester, the paper will be legal method, law of contract, English first, history, sociology, political science, and economics. In second semester, it will be law of contract, law of tort and consumer protection, constitution law, legal history, sociology, English, legal research, and moot court. Your much awaited paper, because before going to trial for the moot court, you definitely need to know the theories about all that. In second year, as comprised 2 semesters, third semesters and fourth semesters, family law, law of crime, constitution law, history, economics, and political science. 3 papers will be from humanities background and 3 from the law. In fourth semester, it will be family law and law of tort and consumer protection, legal history, sociology, English, legal research, and moot court. In third year, it will be family law, law of crime, constitution law, history, economics, and political science too, because it's divided in 2 parts. And in fourth semester, it will be family law too, law of crime, administrative law, history, economics, and political science. For the BBA LL.B students in first year, it will be legal method, law of contract, English 1, principle of management, managerial economics, financial accounting, quantitative techniques.
In second year, it will be law of contract, law of tort and consumer protection, legal history, financial management, English, legal research and notebook. In third year, it will be environmental laws, code of civil procedure, code of criminal procedure, human rights, ADR, strategic management, and summer internship. And sixth semester, it will be jurisprudence, law of evidence, code of criminal procedure, property law, code of civil procedure, and public international law. From the fourth year, it will be common for all BA LL.B and BBA LL.B. आपके फोर्थ ईयर और आपके फिफ्थ ईयर के पेपर बिल्कुल BA LL.B और BBA LL.B के स्टूडेंट्स के लिए समान होंगे। थर्ड ईयर में भी आपके ऑलमोस्ट पेपर एक जैसे होते हैं, कुछ एक दो पेपर्स को छोड़कर। इन पेपर के डिस्क्रिप्शंस में क्या खास बात है, ये मैं बच्चों को बोलना चाहूंगी, बच्चों के साथ करना चाहूंगी कि जब आप ये पेपर पढ़ रहे होंगे तो ये सारे पेपर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं और आपको डिफरेंट ब्रांच की नॉलेज देंगे। आई होप कि अभी इन पेपर्स ये सारे पेपर्स के सिर्फ आप नाम कुछ के एक दो आपके साथ रह जाएंगे, लेकिन जो मैं बात आपसे कर रही हूँ इस बात को आई होप कि आप ध्यान रखेंगे कि जब आप इन पेपर्स को पढ़ना शुरू करेंगे तो कुछ ऐसे पेपर होंगे जो आपको आपके लिए जो है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव रहेंगे और आपको वो पेपर पढ़ के अच्छा लगेगा, तो डेफिनेटली आप उसी फील्ड में अपना करियर बनाएंगे, चाहे वो क्रिमिनल का पेपर है या एविडेंस का पेपर है या फैमिली का पेपर है। तो इस तरीके से अलग अलग पेपर्स, हर तरीके के जो ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते हैं हर तरीके के पेपर्स आपको पढ़ाए जाते हैं, बट जो पेपर आपको सबसे ज्यादा कनेक्टेड फील होता है आप उस चीज को अपना करियर पाथ के लिए चूज करेंगे, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी पढ़ाई आपके बिना मन के हो सकती है, आपकी स्कूलिंग आपके बिना मन के हो सकती है, लेकिन आगे की लाइफ जो होती है वो हमेशा वही चूज करनी चाहिए जहां हमारा इंटरेस्ट होता है। अदरवाइज इट विल बी वेरी हार्ड टू गेट सक्सेस इन फ्यूचर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। Now I invite Dr. Amit Jain, Director of Corporate Affairs, on the stage, please. Good afternoon to all the students and सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। Here I would like to extend my sincere thanks to all the guests, those who are present today. As I would like to start with the academic journey of the college. For the 5 years, you are embarking on this exciting academic journey. You will be developing here knowledge, the skills and habits of learning and adapting. We have a special cell for student counseling as well, where 20 to 25 students will be allotted to a faculty member who will be guiding, mentoring throughout the semesters. Second activities would be value-added certification courses. Here you would have the chance, यहाँ आपको एक मौका मिलेगा अपने आप को इन्वॉल्व करने का, कुछ नई चीजों को जानने का. Whether it would be intellectual rights, intellectual property rights, intellectual law, and other types of the law. The third activities would be your academic visits to various courts and jails. In the upcoming 5 years of academic journey, you will be faced. You will have an exposure to various courts, Kadgaduma Court, Roli Court, Waka Court, Sakir Court, or others, as well as some of the jails of the Delhi. Some sports activities throughout the sessions, the trainings, different activities, your national law festival around the year, that is Law Fiesta, the Winter Fest, that would be called as Ullas, the convocation ceremony, farewell party, that is Rayu, alumni meet, which is called Reconnect. Next, that would be very, very important, placements and internships at the School of Law. Everyone says from since morning that 3 things is required: sincerity, dedication, and hard work.
This will prove in fourth year and final year where all the law firms, corporate sector comes up and will face you with them. Genesis Cell offers these placements and internships. Here are some of our recruiters, and these are the last one, that is the clubs and the committees. Various clubs and the committees that college have, that is academic committee, placement and internship committee, excursion trips committee, mood court committees, and others. With these words, I would like to say only one thing with concluding my speech. Bright future is nothing but just a combination of determination, optimism, and self-assurance. बहुत जरूरी है इन तीनों चीजों का आपके अंदर, इनको अपने अंदर ढालिए आज से और शुरुआत करिए. Thank you so much. Thank you so much, sir. Students, this was a brief presentation regarding your journey in CPJ College with School of Law. I once again thank all the management members who have come over here and invited you all. Guys, please lights on with you. Light up on of Pradesh as well. I request Director General Sir to kindly come on the stage for some important announcements. The slide at the last, please bring it to the last. Dear students and parents, one thing I would love to speak with you all. और इसके लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा प्लीज. 12 मार्च 2020, 12th of March 2020, we had 14 to 15 routes flying all over Delhi. हमारी ट्रांसपोर्ट जो थी 14-15 रूट्स पे चल रही थी दिल्ली भर में, और nick and corner of Delhi was being covered. 13th March, colleges were closed for COVID. 13th March 2020. और ये जाकर के जो कोर्ट के ऑर्डर्स हुए, गवर्नमेंट के रादर ऑर्डर्स हुए, NCP of Delhi and the central government for the colleges to reopen was on 23rd of February 2022, which means nearly 2 years absolutely total closure. और उस पे भी ऑर्डर हुआ कि आने वाला जो सेमेस्टर है वो कॉलेजेस हाइब्रिड चलाएंगे, which means कि कोई स्टूडेंट अगर आना चाहता है तो वो आए, और अगर वो घर में बैठ के पढ़ना चाहे तो घर में बैठ के भी ऑनलाइन ले सकता है, जैसे पिछले 2 साल से ले रहा था. 90% of the students में भी हैबिट हो गई थी. क्या था? They did not come. Very few students only came. And of course, it gave a very big jolt to our complete transport system, क्योंकि 2.5 साल तक बसेस चली नहीं, etc. etc. और उसके बाद जब नेक्स्ट सेमेस्टर आया, दैट इज अब आप समझ लीजिए नियरली 3 साल 2.5 साल के बाद जब नेक्स्ट सेमेस्टर को ऑन किया गया, तो बच्चों की तरफ से रूट्स की प्रेफरेंस नेग्लिजिबल ही थी. And it is not feasible for us to run any route until and unless there is a strength of 40 students in that route. 40 बच्चों का किसी भी बस में किसी रूट में होना बहुत जरूरी है. जहां से शुरू हो रही है कॉलेज तक आ रही है कि डिफरेंट स्पॉट्स से पिकअप पॉइंट से बच्चे उस बस में चढ़े, and only then it is feasible for the students, for us to run that route economically. क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर है वो पर मंथ जितना हमसे लेते हैं, ऑलरेडी बहुत ही सब्सिडाइज्ड कॉस्ट में चला रहे थे, एंड द कॉलेज फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स हैज बीन सफरिंग इमेंस लॉसेस, running into lakhs and lakhs of rupees because of this. As a result,
इस तरह 4 रूट्स हमने इंट्रोड्यूस जो किए हैं जिसमें सबसे ज्यादा एक एक्सपेक्टेशन है, और अगर आप में से कोई इस रूट में नहीं बैठता है, सपोजिटली द्वारका मोड़ से जो बस चलेगी और कॉलेज तक आ रही है, अगर आपका स्टॉप है उसके बीच में, वेल एंड गुड, यू कैन सब्सक्राइब एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। अगर आप नहीं बैठ पा रहे हैं, आपका कुछ और बिल्कुल अलग है, then you can always submit today itself कि हम अगर पॉसिबल है तो उसमें अगर हमारे पास इसमें से कोई इवन 30 बच्चे भी आ जाते हैं, 25-30, और अगर कम रहते हैं तो मे बी वी थिंक ऑफ स्टार्टिंग समथिंग एल्स, बट ऑफ कोर्स कुछ वायबिलिटी तो होए, कुछ तो कमर्शियल वायबिलिटी होए उसमें कि हम उस रूट को इंट्रोड्यूस करें। तो काइंडली कीप दिस एट द बैक ऑफ योर माइंड। Students who wish to subscribe to the transport facility on the mentioned routes, which is Dwarka Mode, which is from Rohini sector 21-22 red light, which is from Anand Vihar, और ये routes का सारा आपको जो है आपके साथ, it has already been shared with you all on WhatsApp कि आपके रूट जो है वो कहाँ से शुरू होकर के कहाँ से होते हुए buses कॉलेज तक पहुँच रही हैं। For example, Anand Vihar route covers most of the East Delhi areas, and then via your ISBT and this Buradi and all comes from the outer ring road, so that this traffic-free route in the morning. And one we have started from Jahangirpuri itself, which is from the metro station, and this is how it is. आप में से जो भी ऐसे हैं कि वो ट्रांसपोर्ट अवेल करना चाहते हैं कॉलेज का, और आपका इन चारों रूट्स में आपकी वो नहीं बैठ पा रहा है, pick up point, and my request is that kindly intimate the college today itself। जब अभी आप अपना फॉर्मेलिटीज करेंगे मल्टीपर्पज हॉल में वापस जा करके अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपसे दे रहे हैं, मैंने प्री ओरिएंटेशन से भी सब बच्चों से कहा है कि जो बच्चे CUET से थ्रू जिन्होंने एडमिशंस ली हैं उसकी रजिस्ट्रेशन अब स्टार्ट हो रही हैं। अभी तक जितनी सारी सब चीजें रेगुलराइज होगी, एडमिशंस रादर टुडे इज एब्सोल्युटली द लास्ट डे फॉर क्लैट एडमिशंस। ऑफ कोर्स इसके बाद CUT से भी जब क्लैट के बच्चे होते हैं वो आएंगे, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में कुछ आपसे बात करूंगा, बट CUT के जितने बच्चे हैं आपकी जो डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, whether it's a cancelled check, whether it is a scanned copy of your signature, ये सब चीजें ऑनलाइन we have to submit to IP University। Without that day you will not be able to get registered। जब तक रजिस्टर्ड ही नहीं होंगे तो आगे बात क्या होगी? Okay, and you will be getting calls from college जो कि IP यूनिवर्सिटी से OTP आपके मोबाइल पे जाएगा, जो रजिस्टर्ड मोबाइल है आपका। तो वहां पर आप हेजिटेट मत करिए उस OTP को देने को। जो भी कॉलेज से बात करे और आपसे कहे कि हम आपको रजिस्टर कर रहे हैं, तो दैट इज इट, दैट इज जस्ट टुवर्ड्स योर एडमिशन की और रजिस्ट्रेशन करनी जरूरी है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके आगे, प्लीज टेक इट मोस्ट सीरियसली पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। CUT के थ्रू जितने भी बच्चे हैं, again and again I am repeating, every document should come, 10th, 12th certificate, migration, your character certificate, and something else too. Could you please get lower because you are आप लोग का वो हटा रहे हैं व्यू पीछे वाला का, प्लीज can you work it out that? Thank you. So this is what I would say, and a humble request to work it out। तो आप अपना सबमिशन दे दीजिएगा towards the transport code please। This is a referral incentive scheme। We consider that any student who is already admitted और आज आप ओरिएंटेशन कॉलेज में आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ ये स्कीम कभी भी शेयर नहीं की गई है, ये सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स होती है, बट this was a feeling from all of us, all seniors, management, and we had sat together, और उसमें यही बात हुई कि ये स्कीम को आपके साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि आप आज से हमारे स्टूडेंट ऑलरेडी हैं। वो ये है कि अगर क्योंकि कुछ जो सीट्स थोड़ी सी बची हुई हैं उसमें इवन इट्स थ्रू क्लैट, because there will be a physical spot rounds in the university for CLAT admission, people who have not taken admission till date, only उन्हीं के लिए, और through CUT also। तो CUT के थ्रू कोई बच्चा या CLAT के थ्रू कोई बच्चा एडमिशन लेना चाहे, that is one thing। और अगर even not just law में, even BBA CAM, BC और BCom ऑनर्स जो हमारे नॉन लॉ कोर्सेज हैं कॉलेज में, अगर उनमें भी कोई आपके
personal knowledge में, your family, your relations, your social circles, your neighbors, anybody who wants to take admission, most welcome that kind of forward that person to us and they can come here, can take admission. And of course, you'll be earning a referral incentive of rupees 10,000 for successful admission. Which means कि हम सेकेंड ईयर से करते हैं अपने बच्चों को रेफरल एडमिशंस कहलाती हैं कि अगर वो कोई भी बच्चे को किसी को रेफर करते हैं एडमिशन के लिए, ये पहली बार है कि हमने फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए भी वी हैव ओपनड इट बिकॉज लकीली आप लोगों का ओरिएंटेशन स्टार्ट हो चुका है और आईपी यूनिवर्सिटी की सीयूटी के थ्रू, क्योंकि सीयूटी से जब ऑफलाइन होंगे तो साथ साथ सबसे पहले ऑप्शन वो क्लैट को भी देते हैं ओनली दो स्टूडेंट्स जिनकी आज तक कहीं पर एडमिशंस नहीं हुई हैं. Only those. So any CLAT, any CUT, same for law courses, BBA LL.B, any CET, जो Common Entrance Test है IIT University का, जो कि BBA में दिया जाता है, उसमें BBA और BBA के दोनों सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, BCA और BCom ऑनर्स, इनके भी CET होते हैं, या बच्चों ने अगर CUET भी दिया हुआ हो, तो भी they are eligible for all these 4 courses of non-law courses in the college. So kindly be a part of the family. Give your contribution. As I say, it's always good to give one's contribution as a family member. And let's get started with this. And of course, it will be a good boost to you with getting a referral incentive of 10,000 any admission that you give to the college on all these courses, including LLM also. All right. And in case one person, if you have come across anybody who is not having CET or CLAT or CUET, nahi diye hue any of these competitive exams, and has 12 class scores with him or her, they can also join our sister organization. That's also a college across the road, which is a part of CPJ group of institutions only, which is CPJ Institute of Management and Technology. Of course, that is not affiliated to Guru Gobind Singh Indraprastha University. It is affiliated to another state university, and you have courses like BBA, BCA, BA, LL.B 5-year, BTech in computer sciences, and LL.B and LLM. So these are the courses that we have commenced this year. So it has been running for the last 2 years rather. So उसमें भी आप कोई बच्चा हो उसको आप refer कर सकते हैं. Referral incentive would be the same. So this is what I would like to say. Must come across with it. The college always stands next to you, and as we commit, we will be giving the day the child takes the admission and pays the fee. You get your referral incentives simultaneously. उसी वक्त में. जी, that is it. Was it something? So I think can I go? All right, I'm here. Can I have the slides on and the slides view off? मनोहर हैं आप इधर, आप इसको ऊपर कर दें, स्लाइड्स ऑफ कर दें. Just concluding now, very frankly speaking, and I'm here before you. Any of the question answers round. Any student, any parent has any question to ask, you may kindly do so. I'm very much here to reply. Hello. Hello. Yeah, please. Hello. Anybody wants to ask anything? I'll give you the mic. Sir is with us. किसी को parents को भी कुछ पूछना हो, उसके मन में कोई doubt हो, तो वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, मुझे mic दे दीजिए. Anybody? कुछ पूछना चाहेगा कोई? कोई student कुछ पूछना चाहे? Anything? Anybody can ask. Anyone? Please raise your hand. Okay, let me give you an incentive. Anybody who asks any question, that means you have the initiative to represent yourself. Okay, I give you this gift. So you will go back home with your orientation gift today from the college. I still have a gift that I got. We did not have any orientations and all, but they had asked for introducing, and there were some questions being raised in Hindu college, which I joined. And I still remember the date was 16th July 1981. 16th July, Hindu College, Delhi University. I joined economics honors, and that day I came back with a small thing, which is still there in my study room, very much being decorated, because that was the first thing I received as a college student, the very first year of my college. So we have ma'am, please.
kindly introduce Coming to you, wait. I'm Seema Purva. I'm BA Honors with Economics, B.Ed, Entity and CTED. My son, Divya Purva, you're a student BBA LL.B. So, sir, I am asking just, you were talking about sports activities, okay? So, sir, sports activities, any coaches or any free periods ki they can, matlab, student can take any coaches or any activities like just football or this. Get nearer the mic, please. Ma'am, I understood about it. Sports is very much one of our very important areas where we focus quite a lot. And any students who's keen into the games that the college has its own team, which is cricket, which is volleyball, which is basketball, which is badminton, which is table tennis, which is tug of war, which is kabaddi. All these things we have many students who's part of it, उनके prelims होते हैं, उनके trials होते हैं, anybody who's definitely, you know, of the caliber, irrespective of first year का student है, किस year का student है, उसको team में दाखिला मिलता है, is a very much a part of the team, and then how the team goes through training and all those things, and then they definitely go through that phase. Yeah. Okay, thank you, sir. And आपने जिस तरीके से students को motivated किया, तो students भी हुए हैं और कहीं ना कहीं parents भी बहुत हुए हैं. So thank you very much. Thank you so much. That's what I was aiming for. If it has happened, thank you so much. Yeah. Thank you so much, ma'am. From there, my conference was there, no? Chancellor, mic ले लीजिए. Wanted to ask something. Yes, one thing. Hello. Hello. Yeah. Hello sir, I'm Nisha. Nisha. Yeah. Yes, Nisha. सर मैंने बहुत सुना है कि कॉलेज मैटर करते हैं कि गवर्नमेंट है या प्राइवेट. ये क्वेश्चन हमेशा मेरे माइंड में रहता है और मुझे बहुत डर भी लगता है कभी-कभी. इवन कि मैंने गवर्नमेंट के लिए तैयारी की थी. एक बार मैंने दिया था कैट बट मेरा नहीं निकला, तो फिर मैंने ये ले लिया, आपको मिला है. तो क्या सर कॉलेज मैटर करता है आगे फ्यूचर में कि गवर्नमेंट है या प्राइवेट है? गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है, बेटा ये तो बिल्कुल मैटर नहीं करता. कॉलेज क्या है ये मैटर करता है, वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग. आप ये मत सोचिएगा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से निकला हुआ लॉ का बच्चा ही कुछ जिंदगी में आगे बढ़ेगा, या आईआईटी का पढ़ा हुआ, दिल्ली आईआईटी हो, चाहे वो खड़गपुर हो, चाहे वो मुंबई हो, उसी का एक बीटेक का पढ़ा हुआ बच्चा जो है वो सिलिकॉन वैली यूएस में जाकर करके वो आपके लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस को हेड कर सकता है, लाइक वसुंधरा पचाल हो या कोई हो. वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट रुड़की का भी बच्चा जो है वो भी उस लेवल तक पहुंच सकता है. So don't take it this way, whether it's a private college or it's a government college. What is the college like? That is what is matters. How is the study there? How the teachers there? How the complete overall, environment of studies and all co-curricular things that are happening over there. Yeah. Sir, as we know, bias is everywhere. Why? Bias, भेदभाव कि कौन private से है, कौन private. Violence. Bias. Biases. Yeah. I don't know. You have just passed your class 12, but you are don't mind if you're talking as if you have received life too much. Very frankly speaking, biases in colleges, I think so. That's the least. Like I'm here for 12 years. I don't think so. There's any bias towards any students. Means any student who's bright. Any student who's bright is bright. Somebody who's not bright is not bright. Maybe some student is not too bright in academics, but is very good at debater. Is bringing trophies to the college. So this is a named college. Maybe somebody is extremely good in music. Is always there in any of the programs of the college with the guitar and of course coming out with things. And of course he has passion that I'll become a great musician one day. Maybe he's studying law. Sir, except my father, no one with me, my family or friends that you are going to do this. But even I am here with my confidence that I can do this. So am I right? Yeah, why not? That is a very good philosophy with which you have started your legal career, that I can do it. I just said about an elephant hypothesis, wherein the elephant feels that belief that I can't do this. So छोटी से खूटी नहीं
उठा पा रहा है, उसके अंदर एक मेरी ब्रेथ भी नहीं कर सकता। तो आप अगर कहेंगे कि I can do it, so you would be able to do it. That is the very first thinking that anybody should have, and I feel that you do great in this college. God bless you. This one question always disturbs me, sir. That the private and government always disturb me, and my family always demotivate me that you can't do it. Sorry, ma'am. Don't even feel it that way. Very frankly speaking, you have a very solid plus with you. The university you are affiliated with is a government university. Guru Gobind Singh Prasad University is a government university. It is not a private university, it is a government university. All the model जो IP university का जितने भी उनके affiliated colleges हैं वो सारे private colleges हैं. But वो affiliated IP university के साथ हैं. So as a result, they are called self-financing institutes. All colleges, whether it's us or it is anybody else. Okay. So उसमें model एक दिन वैसा है, but of course we adhere to each and every rule and regulation of whether it is curriculum, it is course, it is whatever. That to the IP university. So that तो आपका एक मॉडल ऐसा है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एक गवर्नमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर अंटिल IITs हो, IIMs हो, वो सिंपल बात है. आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा मिलेगा. वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट मिलेगी और आपको कॉलेज जो है उसका प्राइवेट सेक्टर से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सब विल गेट एक्सीलेंट. So this is a good combination. So rather begin happy about it. Thank you so much. God bless you, Nisha. Yeah. Anybody else, please? Yes, please. Good afternoon, sir. My name is Daksh Kaushal. And sir, my respectful question is that what were the principles that you followed in our age that you were standing there? That's a good question. Please have a seat, Daksh. No, sir, good, thank you. Very frankly speaking, when I joined my college for my first year, अब चलो आपने पूछे या तो चलो बताता हूँ. I was a student of Bharati school, Delhi, right? And I passed my 10th in 1979. Was a topper. Okay, CBSE topper. Again in 11th. Very interesting चीज है. In 11th, I was not too keen for sciences or engineering and commerce and all. Wanted to take humanities. Was very much interested in literature and all. So I picked my name and dropped my name in humanities group of the school. Very interesting students will laugh at it. So I put my name in the humanities section. I'm talking of 1981. Sorry, 1979. This is after 10th. Humanities arts का stream लूँगा बाल बाकी. And I went with the family to South India for a trip, you know. And when the results came, I had already since उससे पहले बच्चों से भरवा दिए थे preferences. So my friends, you know, mobiles वगैरह कुछ होते ही नहीं थे. There was nothing mobile, nothing like that. So you were totally a cut-off person in South India, and you know, we were in Tamil Nadu and Kerala and all. So when I came back to Delhi, I realized that of course results का तो पता चल गया था. When I went to my school, I saw the list. My name was on the top, humanities group. Absolutely on the top because I had such a brilliant percentage that मैं तो कोई सा भी group मिल जाता था, मैं उसमें भी top नहीं रहता. But I was in the humanities top. फिर मैंने जब देखना शुरू किया कि जितने मेरे good friends थे, अपने 9th 10th तक जितने good friends थे, there was none in that humanities group. And they are still very good friends to me and great doctors and all this. Then I saw who are in the group. Believe me, there were 40 students. There were 3 boys and there were 37 girls. So I said, very difficult to remain for next 2 years with all 37 girls and only you are there along with 2 boys. That is not a good bias, okay? Not a good gender equation. So I thought what to do. I went to principal. He said, I was amazed. Why did you take this? आप अभी तो साइंस के लोग क्योंकि आपने आर्ट्स में जाना है. तो आपका 12th के बाद आपके पास वो रास्ता खुला हुआ है. अगर आप कहते ह्यूमैनिटीज ले ली तो आपके पास वो रास्ता प्रतिबंध हो जाएगा. ना आप इंजीनियरिंग में जा सकते ना मेडिकल में. और बच्चों बुरा माना, आई एम टॉकिंग ऑफ 1979. कुछ एवेन्यूज नहीं थे. There were no avenues. आज आप जब 12th करके आए ना, आपकी avenues ही avenues भरे हुए हैं. Opportunities ही opportunities हैं. It is upon you how you grab it. For example, I was a good speaker. So I opted for medical. I did not go for engineering and all. I opted for medical. Remained again very good, you know, in academics. Did a lot of others. But of course, never wanted to join medicine. My co-friends are top doctors today who were with me in the medicine group. But I got economics honors. Shifted myself to humanities. जबकि very frankly, जब मैंने books पढ़ी,
ओके, चाहे वो जेफ कीन्स की हो, चाहे वो एमंडसन हो, चाहे वो जेराल्ड मेयर हो, economics all over the world, barring India and very few countries in Asia, it is considered a BSc course. Are you getting the point? आप सारी बुक्स देखो तो उसके referred for BSc and this, okay? Yes, not a graduation in humanities like in India it is BA Honors Economics. Otherwise, you go to Britain and you go to other places it is BSc Economics. And you get to economics. What I'm talking about opportunities, the one thing I was aware of, as you said, how you develop yourself. One thing I knew about myself, I cannot remain quiet. Okay? And one thing I knew about my plus point was that I was a good speaker. Not now. This is from my class 9th, 10th, it's a age 7th, 8th, 9th, 10th. I was a very good speaker with a very good command over both the languages, which is English as well as Hindi. Hindi, why? My father was the renowned writer of India, Shri R.S. I lost him around 10 years back. Padma Shri awardee and बहुत ही प्रखर हिंदी के साहित्यकार लेखक कवि कथाकार है and one of the stalwarts of Hindi literature. My mother was a renowned classical singer, Srimati Kaushalya Devi. So I came from a family which was purely from art and culture. And I was studying economics and all, but I wanted to go into जो मेरे अंदर चीज थी ना बेटा लक्ष्य that was to get into media. But media के नाम पे कुछ नहीं था उस समय इंडिया में. There was जो मेरे एज की आप से यहाँ पर हो गए कि बच्चे तो सोच भी नहीं सकते, सिर्फ एक दिल्ली दूरदर्शन आता था जो टाइम से शुरू होता था और 10 बजे बंद हो जाता था, फिर वो 11 बजे तक चला, उसके बाद वो 12 बजे तक चला. और when I was a school student, संडे पिक्चर आया करती थी कोई जो हाफ बिफोर इंटरवल सैटरडे को आती थी, आफ्टर द इंटरवल इट यूज्ड टू कम ऑन संडे. प्रोग्राम्स आपके कुछ इंटरटेनमेंट के नहीं होते थे, उसके नाम पे एक चित्रहार आता था which used to be on Wednesday and later on it was on Friday also. कृषि दर्शन आता था कि आलू प्याज की बात होती थी, उसको ज्यादा टाइम दिया जाता था. So there was no other news and today anybody wants to get into media. If you talk about opportunities, somebody wants to get into media, आप क्या ना आप थक जाओगे चैनल स्प्लिट करते अपने LED में LCD में, ओके, खत्म नहीं होएंगे 24/7 as I said. So media, no problem. Opportunities and opportunities. So I would feel that here I would be in something like I went to, I went to economics honors, Hindu college, and I went to the Delhi School of Economics, a very premier institution of Delhi University. I have even 32 students, out of which 18 were foreigners, and there were only 14 Indians. I was one amongst them. We had people like Amartya Sen, the Nobel laureate, the Nobel Prize winner, as an American. He left India, became an American, but of course from Indian origin. In development economics, he was our faculty. Shugabhai Chakravarti was our faculty. So we studied economics in Delhi School of Economics from then. Okay, Gerald Bayes, these people used to be a visiting faculty from University of Pennsylvania and Stanford University and such places. So that is what makes the difference. What somebody was asking me, the good college will make a difference. That is what makes the difference. Where you study, what peer group you make. Who is your peer group? आप किस संगति में आप बैठ रहे हैं? Very important. I am telling you, you're talking to me. Hindu college, everybody knew me, whether it was a first year student or second year, third year. In second year, I became the cultural secretary of Hindu college. As a result, everybody knew. Okay. Now, when the whole college knows you, you say hello to everybody. गुजरते बोलते hi, hello, hi. But उसमें अगर 1000 बच्चे हैं, 1000 में यदि 100 जिनके साथ आप कॉलेज के ना कैंटीन में बैठ कर चाय पी सकते हो. So 900 are off. Out of those 100, there will be say maximum 30 जिनके साथ आप जाकर के नॉर्थ ईस्ट रेस्टोरेंट में बैठ कर चाय पी सकते हो, right? Out of those 30, there will be only 10 or 15 जिनके घर आप frequently जा सकते हैं, वो भी आपके घर frequently आ सकते हैं because they are absolutely thick friends to you. So this is how you do things, and if everybody does it, but who are those 10 is the important decision. So have these thoughts right from now. और ये कब आती है बच्चों? सेल्फ इवैल्यूएशन, हिंदी में कहते हैं आत्म विश्लेषण. जब तक आप अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट नहीं करोगे कि मेरे अंदर है क्या, only then you will be able to gauge कि आपके अंदर क्या आपको करना है. So this is it. I think I have answered you quite in elaborate. Thank you so much, sir. Wishing you a great day ahead. Thank you so much, my dear. Anybody else, please? So we have only 3, 4. How many? One was here, 2, 3, 4.
I have some more prizes also. Anybody else wants to go back to the reward? Yeah, please. So let it be the last one. It's 1:30, so इससे हम conclude करेंगे. Yeah, please. Good afternoon, sir. So myself, Sheikh Dabas. I'm in the BBA LL.B course. So I want to know, as we know, law is a long journey, right? And time will never stop for anyone. Sorry, law is a long journey. And It's a long journey. And time will never stop for anyone. And so we need patience level 2. Yeah. So how will we manage time and patience level together? See, if you really look at it, today's world is very, very competitive. Whether it is law or it is any field. अगर लॉ नहीं लिया होता आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग ले ली होती, नहीं लिया होता आपने इकोनॉमिक्स ले ली होती दिल्ली यूनिवर्सिटी में. डोंट यू फील कि ये वाली चीज लेकर के बेस्ट ओवरनाइट सक्सेसफुल हो सकते हो 3 साल की ग्रेजुएशन के बाद या 5 साल की लॉ ग्रेजुएशन के बाद? दैट्स नॉट देयर. ओके, perseverance is the right word. I would not say the word patience. Patience, आप लोगों में अगर इसे इनमें patience नहीं है, तो जबकि जो आप लोग absolutely generation X है, rather XPD or generation Y. Okay, there is so much of a big difference between what was our generation, what is the generation today, in their complete thought process and their outlook at their things. Because example देता हूँ मैं आपको, छोटा सा example, patience की बात हुई. अभी आपके साथ क्या है? आप कल कॉलेज आएंगे, you make friends with 4-5 मेरी close buddies आपके हो जाती हैं, जिनसे आप बात ज़्यादा करेंगे. Okay, now आप कॉलेज के कैंटीन में बैठेंगे, आपके आते जाते बातचीत में, there is some kind of a difference between you and one of your friends. For example, let's say you're talking about patience. One of your friends, you develop little kind of a disconnect on any kind of a topic आप बात करें and all. And that friend says, okay, bye, see you, and she leaves, right? She is there, कभी वो कॉलेज की गेट पे नहीं पहुंची होगी. Since मोबाइल आपके हाथ में है, she is contactable. There is no point given to that time gap. एक टाइम गैप दीजिए, अपने आप हर चीज रिजॉल्व हो जाती है. आप immediately will give a call. Hey, I did not expect this from you. This is not fair. The other one is replying back. Come on, I also never expected this back to you. Because both are in an agitated state as of now, being our human nature. And you're not giving time to it. It will automatically budge off if you don't speak about it. Tomorrow we'll be back to square one. This used to be happening in our times. There was no mobile phone, there's nothing like this. Next day, I would have gone back, I would have thought, hey, come on, I didn't get into this with such a close friend of mine. He was right there. Even he was thinking the same day, come on, you was right there. And next day we meet with a very positive feel. But here what's happening with new generation is not giving the time gap. You're not giving the time gap to think that let things resolve on its own. Which happens, which is the basic nature, which is the basic rule of nature in fact. Getting the point? So what you asked is, no doubt, patience and perseverance is very much required. It has to be there. Without it, you can never succeed in life. But anything you have to be patient. You cannot become an advocate in just 2 days. You have to be patient for 5 years to be eligible to be an advocate. And now, the day you finish your 5 years, you have the membership of the bar councils and of course the enrollment. Goswami ji he is the chairman and all this. Enrollment committee जो होती है दिल्ली बार काउंसिल की, आपको अपनी membership card भी मिलेगा, right? But does it mean that you become and clients will start coming to you just like that? Now you have to learn, you have to do the course, you have to understand so many skills. कितनी skills? You have to understand so many skills. आपका client आपके पास आया, last week I'm talking to all of you because you will also get delayed. How many skills the law students require? For example, आपके पास आपका client आया, अब उसने आपको कितनी सारी बात बोली 1 घंटे में, राइट? आप उसके केस को कितना समझ सके? आप समझ नहीं पाएंगे अच्छी तरह if you are not good in your analytical skill. How are you able to analyze it? अगर analyze नहीं किया तो you are going in the other direction. Client आपको कुछ और बोल रहा है, आप बिल्कुल अलग कर रहे हैं. So you have to have analytical skill. अब आपके पास analytical skill अच्छी थी, आपने उसके points को समझ लिया, and now you want to put it and put a case of it. Okay? Now, putting a case to it, you have to have about drafting skill. How beautifully you draft it, right? Once it's been drafted, you need to be comprehensive skills also. That means आप unnecessary चीजों को काट दोगे, बिल्कुल important चीजों पे महत्ता देते हुए चलोगे. And this is how you bring it to a brief. When you bring it to brief, that is called comprehensive skill. That you have comprehensive skill. So अभी तक आपकी क्या 3 skills use होगी? Your skills, analytical skill, your comprehensive skill, and your
ड्राफ्टिंग स्किल, राइट? एक लॉयर के लिए बता रहा हूँ, मैंने लॉ स्टूडेंट, अब क्या हुआ, आपको कोर्ट में पेश होना है अपने उस ड्राफ्ट के साथ जो आप सामने रखेंगे बिफोर द जज, what that must be achieved. Now what is required? Most important, your communication skill. How you are able to communicate. And not only communication skill is required in law. You need to be having conversational skill. कि आप जो बोल रहे हैं वो तो बोल रहे हैं, दूसरा भी वकील जो है वो उसकी दलील भी चल रही है जो आपके ओपोनेंट का वकील है, he is also speaking. You have to understand him also. तभी तो काट पाओगे उसे. So you have to understand, and that is listening आपकी अच्छी है. You can listen there. You can analyze where you are a good conversationalist. You are allowing him also to speak. Right? And of course the oral skills, how you present yourself, the presentation skill is very important. Once you are a combination of these all skills, you are successful. Nobody can stop your success. So try gaining these skills during these years of your studentship. I totally believe parents here, most of you would be younger to me, to be very honest with you. Since my daughter, who is already a manager with Deloitte, a chartered accountant, and she joined her first year, I suppose so, around 9 years back. She is married now. My younger daughter, she is already finished with law, and she is doing great guns in High Court of Delhi. Has become one of the youngest arbitrators. Has already represented India in 2 conferences abroad in Hong Kong and in your London. So this is how things are. So, and I've never seen both of my daughters who love you, they enjoy also, they remain us also. But there is always to be a balance to be created. That when to do that, when to do that not. The moment you are able to create that balance, nothing to beat it. So thank you so much. Yes. Let us have pleasure, sir. So we have our alternate, Shipra over here. He wants to speak few words to all the students over here. Oh, yeah. Shipra? This is our present day student in 4th year now. ऐसे टाइम लगता है आपको अभी जोइन किया था लगता है ऐसे आपके डैड भी लेकर मुझे आकर so anyway she is in the 4th year now. This is how time flies. You want to say something? Good afternoon everyone. My name is Shipra and currently, as was said, I am in 4th year pursuing BBA LL.B from this university. So yesterday, feels like yesterday कि मैंने कल ही का एडमिशन लिया था और आज मैं 4th year में आ गई, पता ही नहीं चला कैसे. एंड शालिनी मैम ने मेरा एडमिशन करवाया था एंड कार्तिक सर एक हमारे थे, उनसे बात करके मैं इस कॉलेज में आई थी. उससे पहले मुझे भी नहीं पता था, थोड़ा डर था, पता नहीं कैसा कॉलेज है, कैसे करूँगी, होगा भी आगे कुछ कि नहीं होगा. बट धीरे धीरे टाइम के साथ चीज़ें प्लेस पे आ गई, सब बढ़िया हो गया. एक खास स्टेज फेयर था मुझे कि बोलूँगी कैसे, डांस कैसे करूँगी, गलती हो गई तो धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज आई, मैंने उसमें पार्ट लिया. गलती हुई ऐसा नहीं गलती नहीं हुई बट उसको सुधारा. टीचर्स ने, फैकल्टी ने बहुत हेल्प करी. छोटी छोटी चीज़ें, गलती करना, बोलना, सब चीज़ों में धीरे धीरे अंतर हुआ. पहले से बेटर हूँ मैं आज क्योंकि अब बोलने का ढंग है. अब मुझे नहीं पता है कि कब कहाँ बोलना है. ठीक है, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं. बट जैसे कि हमारे कॉलेज में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे क्लब हैं जिसमें आप क्या होगे, जैसे मैं झनकार ग्रुप में हूँ और रेगुलरली मैं डांस परफॉर्मेंस करते रहती हूँ. कोई भी इवेंट होता है तो हम डांस परफॉर्मेंस, सिंगिंग परफॉर्मेंस कुछ ना कुछ करते रहते हैं. So I am a member of that and I'm thrilled to see you guys. और आप आओगे, हमें अच्छा लगेगा. Please cooperate, please हमारे ग्रुप्स में आना, एक्सप्लोर करना, अपने हिसाब से चीजें एक्सप्लोर करना and please see what suits you best. और welcome to the CPJ family. We are thrilled to have you. और freshers में we are looking forward for you. Thank you guys. Thank you. Thanks, sir. Can I immediately have the students and that one parent who did speak? Madam, you can also please come. I request everyone, आप मेरे का स्टेज पे दूर हैं, मैम प्लीज. Kindly come on the stage, please. जितने भी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा था, वो सारे स्टेज पे हैं. Yourself. There was a boy also. There was a boy too. There were 2 boys. Yeah, please come up. There was one more, I suppose so. Was it me only? Yeah. That's it. Please. Welcome, congratulations. Yeah. I'll give it all together. Yeah, please come. Congratulations, Peter. God bless. Namaskar. Please. Oh, God bless. So, good applause for them, please.
This is the first thing as a college student that he's carrying. God bless. You remember that you went through the college on the orientation day and you will be passing it to your child. And you ask him that he would also take the initiative as you did today. Yeah, thank you. Let's have a click together. I come to the center. You please join, please. Yeah. Anybody want to say something, madam? It's okay. Once again कि सर आपसे सुन करके बातें सुन करके हमें बहुत अच्छा लगा. As a parent, I am feeling very secure. Thank you sir. Thank you so much and all the parents over here, please. एकदम अपने आप को फ्री मत समझ लेना कि आज कॉलेज में बच्चे चले गए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी. Please keep a tap on them. That is for sure. Because I suppose college becomes the second home, but home is always the first home. So how you have your home and how you bring everything over there, that's very, very important. So kindly keep a tap on them. एक manage करना balance के साथ बहुत जरूरी है parents. As a parent, I have felt it and I have done it with my wife, and I hope you all will be doing the same. And this is how. So thank you so much. Whatever best I could have shared myself with you today, I have done so. And Rishni would guide you that what is to be done after this in multi-purpose hall. And of course, at any point of time during your 5 years stay over here in the college, you're most welcome to come and meet me anytime. And students, after boarding, meet me, and you will always feel that DG sir is very much approachable. You can come to me at any point of the day and for anything, that way. Thank you so much, all of you. Love you. Yeah. Thank you so much, Goswami sir, for always enlightening us. Today, with the deep satisfaction, we conclude that there is no alternative of hard work and dedication in this institute. We not only give our students the best, but also make them take the efforts to integrate them to a tough mindset, but a determined, the passionate, and the successful focus on their goals. Students, there are some important announcements. मैं हिंदी में अनाउंसमेंट करना चाहूँगी. हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं. आप सबको इसके बाद प्लेसमेंट बॉक्सेस मिलेंगे ऑन द गेट, तो लेके आप सब मल्टीपर्पज हॉल में जाएंगे. वहाँ से आपको स्कूल ऑफ लॉ की टीम और हमारे 2 प्रोफेसर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाएंगे. आपकी बुक बैग फैसिलिटी के लिए जितने भी पेरेंट्स ने बुक बैग फैसिलिटी बच्चों बुक बैग फैसिलिटी ली है वो हमारी 4th फ्लोर पे लाइब्रेरी में जाके अपनी बुक्स कलेक्ट कर सकते हैं. अगर कोई पेरेंट्स लेके आए थे और उन्होंने अभी भी डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, तो स्टूडेंट्स ने अभी फीस नहीं भरी या फीस भरने का कोई इशू है तो हमारे वहाँ पे अकाउंटेशन फीस अवेलेबल है मल्टीपर्पज हॉल में. आप उसे भी जाके अपनी फीस सबमिट करा सकते हैं. और अगर कोई बच्चा अब इंटरेस्टेड है बुक बैंक फैसिलिटी में या फीस भरने में या कॉर्पोरेट ड्रेस अवेल करने में, तो अभी भी आप पे करके फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं. इसके बाद जब आप अपनी अभी 145 तो वी विल बी स्टार्टिंग एट अराउंड 2:30. कॉलेज के बाहर आपको बसेस मिलेगी जो मधुबन चौक और शामीपुरी तक जाएगी. मैं रिक्वेस्ट करूँगी सारे पेरेंट्स को, अगर कोई सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो कॉलेज के बाहर आपको बस मिल जाएगी. कोई भी कंफ्यूजन और रिसेप्शन में भी पता कर सकते हैं. एंड हमारे एजुकेशन टीम आपके साथ ही है, सारे मेंबर्स यहीं पे हैं. So I request all the thanks once again all the students and the parents who are over here for this solicitation. Thank you everyone. One by one I really request थोड़ा आराम से जाएं, एकदम से सारी भीड़ बाहर जाएगी.